Hello everyone. Today I am going to teach you about Internet of Things. What is Internet of Things? Internet of Things is the study of interconnected devices where the devices are made smart enough to share information with each other and the cloud. This new wave of technology is going beyond computers and smartphones. That is, it going towards connected homes, connected cities, connected cars, connected healthcare and many more. Let me explain. As we are surrounded with lots of physical devices like refrigerator, television, air conditions, lights, fans, microwave ovens, etc. Now by using IoT, we can make these devices smart enough to share information with us, and the best part is it can be controlled from anywhere in the world. Wouldn't you like if you can turn on and off your lights, fans or any electronic devices at your home with your smartphone from anywhere in the world? Or if you can unlock your door for our friends or relatives without being present at the home. With IoT, all these things are possible now. Let's see how. For example, there are two persons named A and B. So one day A and B were hurried in office and they forgot to turn off the lights. A lives in a house where most of the electronic devices, especially lights, are not connected to the internet. So to turn off the lights, A have to return home. But on the other side, B lives in a house where most of the electronic devices are connected to the internet. So B can turn off the lights with their smartphones and saves electricity. Let's take another example. One of your friends comes to your home and you are not present there. Then he calls you and you say that he has to wait because you are not present at your home. But if your door lock is IoT based, means if you can control it from outside using your mobile or web app, then it will be a great benefit for you. So now you have an idea how IoT is making our life easier and more connected. Let's talk about the brief history of IoT. IoT was first introduced in 1999. Kevin Aston, co-founder of Auto ID Center at MIT, is credited by most sources with coining the phrase Internet of Things. Aston's idea was to use the IoT for RFID, that is radio frequency identification, to connect devices. By June 2000, the world's first internet connected refrigerator, that is the LG Internet Digital Diodes, had appeared featuring a LAN port for IP connectivity. It has only been in recent years that IoT has become a reality on a massive scale. The IoT is no longer just about a handful of high-end internet-connected appliances. Now, it's common for all type of devices from TVs to thermostats to cars to connect to the internet. Nowadays, a lot of appliances are being connected to the internet. There is a lot of research already going in this field. Amazon Alexa, Google Home Assistant, Apple Siri, self-driving cars are some common examples of the IoT in real life. It is being said that IoT is going to affect our life in every form. It is going to be smart retails, smart homes, smart cities, connected devices, almost everywhere. It was found that in 2013 there were 9 billions of IoT devices, but it is expected that these numbers will increase up to 1 trillion in 2025. So IoT is going to be the hottest IT buzzword at the moment. There are going to be lots of investment in this field. So it is estimated that the global worth of
Internet of Things based technology is projected to be $6.2 trillion by 2025. So definitely there are going to be millions of jobs in this field. So you know the point, there are a lot of reasons to study Internet of Things, and we make this course in a very efficient and interactive manner such that you will easily understand the IoT concepts. So let's get started, guys. Hi everyone, welcome to the Edutainer. In this lecture, I am going to teach you about the basic building blocks of IoT. So we have four basic building blocks of IoT. First, I have write down here. First is microcontroller, second sensor, third actuator, and the last one is IoT cloud and communication. So I will teach you all these components one by one. So first we have to learn the microcontroller. What is microcontroller? So as you already know a little bit of microcontroller. Microcontroller is a device in which the CPU along with memory elements and input output ports are connected together, or we can say that it is a small tiny computer. Let's see microcontroller. Microcontroller क्या होता है? So आप यहाँ पे मैंने माइक्रोकंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. इसके अंदर मैनी कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है हमारा CPU. CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज की जाती है. अलॉन्ग विथ CPU हमारे पास माइक्रोकंट्रोलर में मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं. मेमोरी एलिमेंट्स में रैम हो गया, रोम हो गया. यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम. रैम का मतलब होता है वोलेटाइल मेमोरी. वोलेटाइल मेमोरी इन द सेंस कि इसमें कोई भी चीज जो है परमानेंट नहीं रहेगी. अगर आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद इसमें से जो भी डेटा रहेगा वो डेटा इरेज हो जाएगा. बट इन रोम इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब यहाँ पे जो डेटा होगा वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा. सो यू गॉट द पॉइंट. Along with memory elements, there are some input-output ports. तो input-output ports किसे यूज करते हैं? Input-output ports का यूज किया जाता है कंप्यूटर से डेटा को इनपुट लेने के लिए. जैसे आपने कीबोर्ड से कुछ प्रेस किया तो इनपुट ले रहे हैं, और मॉनिटर पे आप दिखा रहे हैं आउटपुट, ठीक है. तो ये इनपुट-आउटपुट पोर्ट्स होते हैं. इनपुट-आउटपुट पोर्ट्स के साथ में सीरियल इंटरफेस. सीरियल इंटरफेस क्या करता है कि जो भी हमारा डेटा का ट्रांसफर हो रहा है उसका ट्रांसफर जो है इस सीरियल इंटरफेस के जरिए होता है. आपने सुना होगा जैसे मेनी टाइप्स ऑफ सीरियल इंटरफेसेस वी आर यूजिंग फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा. फर्स्ट इज एड्रेस बस, डेटा बस, एंड देन कंट्रोल बस, एंड द लास्ट इज टाइमर्स. टाइमर क्या करता है? कंट्रोल द टाइम्स. काउंटिंग के लिए जो है हम टाइमर्स का यूज करते हैं. तो माइक्रो कंट्रोलर में ये सारी चीजें एक साथ इनबिल्ट होती हैं. सीपीयू के साथ मेमोरी एलिमेंट्स होंगे और उसके साथ ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे, ठीक है. द वर्ड माइक्रो कंट्रोलर, इससे हमें पता चल रहा है कि जो कंट्रोलर है इसका मतलब ये कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा है. तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है? किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है. तो इसीलिए माइक्रो कंट्रोलर को जो है हम स्मॉल टाइनी कंप्यूटर भी बोलते हैं. ओके, सो माइक्रो कंट्रोलर एक स्मॉल टाइनी कंप्यूटर है जिसमें आपके पास सीपीयू के साथ साथ मेमोरी एलिमेंट्स होंगे और उसके साथ साथ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे, ठीक है. अब इसका यूसेज क्या है? माइक्रो कंट्रोलर का यूज जो है हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है. सो इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस. स्पेसिफिक पर्पस. सो इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस. स्पेसिफिक पर्पस का मतलब जो हमें कोई काम, कोई टास्क अगर हमें कराना हो तो उसमें हम क्या करेंगे? इस माइक्रो कंट्रोलर का यूज करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपने माइक्रोवेव ओवन में हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं. टेलीविजन में माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं. एयर कंडीशन जो कि घरों में कूलिंग के लिए यूज होती है,
उसमें भी हम माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर का यूज जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं और इनमें हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। अलॉन्ग विथ माइक्रो कंट्रोलर समटाइम्स क्या होता है, कंफ्यूजन होती है कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है और माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बता देता हूं कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो माइक्रो कंट्रोलर में आपने देखा कि सीपीयू के साथ में ये सारी चीजें जरूरी है, बट इन माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सीपीयू होता है और ये सारे डिवाइसेस जो है हमें सीपीयू सिर्फ होता है, और ये जितने भी डिवाइसेस हैं जैसे कि मेमोरी एलिमेंट्स है और ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, ये हमें एक्सटर्नली इसके साथ अटैच करने पड़ते हैं या एक्सटर्नली इसके साथ लगाने पड़ते हैं। तो माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है म्यू पी, ये माइक्रो प्रोसेसर का साइन। इसके अंदर सिर्फ सीपीयू होता है। सीपीयू के साथ आप अलग से मेमोरी एलिमेंट्स लगाओगे, रैम और रोम, और अलग से इनपुट आउटपुट पोर्ट्स लगाओगे। सो यू गॉट द पॉइंट कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है। माइक्रो कंट्रोलर में सारी चीजें एक साथ आती हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में हमें सिर्फ सीपीयू मिलता है और सीपीयू के अलावा हमें ये सारी चीजें एक्सटर्नली अटैच करनी पड़ती है। तो जब आप अलग से कोई भी चीज एक्सटर्नली अटैच करते हो तो डेफिनेटली क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर में, और हमारे पास यहां माइक्रो कंट्रोलर है, तो अगर आप माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू के साथ अलग से एक्सटर्नली कोई चीज अटैच करते हो तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो माइक्रो प्रोसेसर की कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है इन कंपैरिजन टू माइक्रो कंट्रोलर की कॉस्ट से। माइक्रो कंट्रोलर की कॉस्ट जो होती है वो कम होती है माइक्रो प्रोसेसर के कंपैरिजन में। सेकेंड थिंग कि माइक्रो कंट्रोलर जो है, प्रोसेसर जो है, वो जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जनरल पर्पस मतलब कि इसको आप एक जनरल कंप्यूटर के तौर पे यूज कर सकते हो। जनरल कंप्यूटर में आप सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि आप गेम खेल सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, कोई पेंट पे आप कोई ड्राइंग कर सकते हो, और मैनी अदर टास्क जो भी जनरल पर्पस के टास्क होते हैं उसको आप कर सकते हो। तो एक जनरल हमारा जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, वो उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। बट माइक्रो कंट्रोलर जो है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि माइक्रो कंट्रोलर किस लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस। देन माइक्रो प्रोसेसर में अगर आप ये सारी चीजें अलग से लगाओगे तो यहां पे जो प्रोसेसिंग पावर होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, प्रोसेसिंग पावर, यहां प्रोसेसिंग पावर जो होगी वो हाई हो जाएगी। क्यों हाई हो जाएगी, इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि सीपीयू है यहां पे सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर के पास। अब इसको जो भी डेटा लेना है या मेमोरी से जो भी डेटा इसको मिलेगा, इनपुट आउटपुट से जो डेटा मिलेगा वो सब एक्सटर्नली भेजा जाएगा। तो जब एक्सटर्नली इसको सीपीयू के पास भेजा जा रहा है तो इसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि डेटा ट्रैवल होकर सीपीयू के पास जा रहा है। बट इन केस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर उसमें सारी चीजें एक साथ अटैच होती हैं, तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वहां प्रोसेसिंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है और यहाँ प्रोसेसिंग पावर जो है ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ प्रोसेसिंग पावर जो है वो कम हो, मतलब इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सीपीयू को इन माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो कंट्रोलर की सीपीयू को ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, वो कम टाइम में भी प्रोसेस कर सकता है डेटा। सो यू गॉट द पॉइंट कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है। माइक्रो प्रोसेसर में आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ सीपीयू होता है उसके अंदर, और बाकी जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जैसे कि मेमोरी एलिमेंट्स, रैम, रोम एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, वो सारे हमें एक्सटर्नली लगाने पड़ते हैं। बट इन केस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ये सारी चीजें एक साथ ही उस डिवाइस में इनबिल्ट होती हैं और पूरा डिवाइस माइक्रो कंट्रोलर कहलाता है। तो माइक्रो कंट्रोलर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बिल्डिंग डिवाइसेस ऑफ आईओटी। जितने भी आईओटी के डिवाइसेस हैं उनमें माइक्रो कंट्रोलर की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट फॉर आईओटी। नाउ नेक्स्ट we should move on sensor. Now let's talk about sensor. So sensor जो है वो सेकंड कंपोनेंट है IoT को बिल्ड करने के लिए। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि सेंसर होता क्या है।
सेंसर वर्ड जो है वो सेंस से आया है और सेंस का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज की सुधनी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे फर्स्ट सेंस ऑर्गन है हमारी ये आंख, साइट, तो इसको बोलते हैं सेंस ऑफ साइट। और सेकंड जो हमारा सेंसर बॉडी का सेंस ऑर्गन है वो है हमारी स्मेल, इसको बोलते हैं सेंस ऑफ स्मेल। थर्ड सेंस ऑर्गन है टेस्ट करना, जिसे हम जीभ के जरिए टेस्ट करते हैं, तो जीभ टेस्ट करने के लिए हम बोलते हैं सेंस ऑफ टेस्ट। फोर्थ जो है हमारा सेंस ऑफ टच, जैसे कि अगर मैं इसको टच कर रहा हूं तो ये हो गया सेंस ऑफ टच, तो ये हमारा हो गया सेंस ऑफ टच। एंड द लास्ट सेंस ऑर्गन इज सेंस ऑफ साउंड। सेंस ऑफ साउंड का मतलब हुआ कि आप कोई भी चीज हियर करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं तो आप हियर कर रहे हो उस चीज को, तो वो कहलाता है सेंस ऑफ और साउंड। तो सेंस ऑफ साउंड ये हो गया, ठीक है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन जो है हमारी बॉडी में होती हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सेंस ले पाते हैं। उसी तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो भी हम डिवाइसेस बनाएंगे, उन डिवाइसेस को भी सेंस करने के लिए हमें सेंसर की जरूरत पड़ेगी। तो सेंसर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ IoT। सो सेंसर का मतलब क्या है यहाँ पे? सेंसर का मतलब है कि जो भी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है हमारे एनवायरमेंट में, फिजिकल एक्टिविटी, या फिर इसको बोलते हैं कई बार फिनोमेना, फिजिकल एक्टिविटी या फिर फिनोमेना जो भी हैपन हो रहा है हमारे एनवायरमेंट में, उसको सेंसर जो डिवाइस है वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करके ये इसे सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये जो सिग्नल्स हैं ये आइदर ऑप्टिकल हो सकती है, ऑप्टिकल सिग्नल, या फिर ये मैकेनिकल सिग्नल हो सकती है, या फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो सकती है। समझ में आया आपको कि सेंसर का क्या मतलब है? सेंसर क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस है जो भी फिजिकल एक्टिविटी या फिनोमिना हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में हो रही है, उसको ये सेंस करता है और सेंस करने के बाद इसे कन्वर्ट करता है सिग्नल के फॉर्म। अब वो सिग्नल की जो है हमारी ऑप्टिकल भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ज्यादातर जो है सुनते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बारे में, क्योंकि हमारा जो भी IoT का डिवाइस बनेगा वो मेनली इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करेगा। और इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करने का मतलब है कि जो सिग्नल्स आप कन्वर्ट कराओगे सेंसर के जरिए, उसको आपको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेंसर का काम है। अब सेंसर में जैसे कि फॉर एग्जांपल कई तरह के सेंसर होते हैं, मैं आपको सेंसर के कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे सबसे फर्स्ट सेंसर आता है टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर क्या करता है? टेम्परेचर सेंसर का काम होता है कि जो भी हीट है, चाहे वो हमारी बॉडी से निकल रही हो, चाहे एनवायरमेंट से निकल रही हो, उस हीट को वो मेजर करता है एंड देन फिर आपको उसकी पर्टिकुलर टेम्परेचर बताता है। तो टेम्परेचर बताने के लिए उसे सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर हम उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उसका टेम्परेचर जो है मेजर कर लेते हैं। तो जनरली ये क्या करता है, हीट को मेजर करता है, हीट को सेंस करता है या फिर मेजर करता है। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। और ये सेंसर के बारे में आपने काफी सुना होगा, क्योंकि ये हर मोबाइल स्मार्टफोन्स में यूज होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। सो प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है एक तरीके से ओरिएंटेशन बताता है कि जो भी आपका मोबाइल फोन है वो किस ओरिएंटेशन में। जैसे कि अगर आपने इसको प्रॉक्सिमिटी, मोबाइल फोन है आपके पास, आप इस मोबाइल फोन के अपने ईयर के पास लेके आओगे तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर उसको सेंस करेगा कि ये अभी जो है ईयर के पास आ रहा है, तो फिर आप उससे बात कर सकते हो। जब उसको दूर रखोगे तो वो फिर कॉल जो है एंड हो जाएगी। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करता है, जनरली ओरिएंटेशन को जो है सेंस करता है एक तरीके से। टेम्परेचर सेंसर एक अलग होता है, इसके साथ साथ हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी सेंसर भी यूज करते हैं। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर में क्या होगा कि टेम्परेचर भी सेंस होगा, टेम्परेचर भी पता चलेगा आपको, और ह्यूमिडिटी भी पता चलेगा। ह्यूमिडिटी कितनी है, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, जो भी ह्यूमिडिटी होगी उसको मेजर करेगा। नेक्स्ट हमारा जो था वो है PIR सेंसर। PIR का मतलब होता है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। ये क्या करता है, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, उन इंफ्रारेड रेडिएशंस को
जो है ये एक तरीके से सेंस करता है, एंड देन उसका आप यूज जो है अपने पर्पस के लिए कर सकते हो, जैसे मोशन डिटेक्शन। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल PIR सेंसर में यूज कर रहा हूँ अपने IoT डिवाइस में, और जैसे ही मैंने अपना हैंड PIR सेंसर के पास रखा तो अगर मैं उससे कोई लाइट मैंने अटैच की है तो वो लाइट ग्लो हो जाए, और मैंने अपने हैंड को उससे दूर किया तो वो लाइट जो है ऑफ हो जाए। तो PIR सेंसर इस वे में जो है यूज किया जा सकता है, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सेंसर्स, सेंसर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बट जितने भी सेंसर्स के टाइप्स हैं या जितने भी सेंसर हैं उसके बारे में हम डिटेल्ड में सेंसर की टॉपिक्स में पढ़ेंगे। लेट्स सी द थर्ड कंपोनेंट ऑफ IoT। सो द थर्ड कंपोनेंट ऑफ IoT इज एक्चुएटर। सो एक्चुएटर क्या करता है, इसको अगर हम कोई सिग्नल दें, अब वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में हो सकती है, मैकेनिकल की फॉर्म में हो सकती है, या ऑप्टिकल की फॉर्म में हो सकती है। उस सिग्नल को ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा फिजिकल आउटपुट में, फिजिकल आउटपुट। सो एक्चुएटर एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम किसी भी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एक्चुएटर। तो यहाँ पे जो भी हम सिग्नल प्रोवाइड करेंगे वो उसको कन्वर्ट करेगा फिजिकल आउटपुट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एक एक्चुएटर जो सबसे मोस्टली यूज होता है वो होता है रिले एक्चुएटर। IoT में मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्चुएटर है रिले। तो रिले एक ऐसा स्विच होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, चाहे वो AC हो या फिर टीवी हो या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि उसे इनपुट के तौर पे मिलेंगे, और फिर वो उसको मैकेनिकली क्या करेगा, ऑन एंड ऑफ कर देगा। एक्चुएटर्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट एक्चुएटर आता है हाइड्रोलिक एक्चुएटर। एक ऐसा एक्चुएटर जो कि हाइड्रोलिक बेस्ड हो। हाइड्रोलिक बेस्ड का मतलब होता है, यहाँ पे जनरली हम वाटर की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिक मोटर या फिर ऐसा सिस्टम जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में क्या करेगा, उस पर्टिकुलर हाइड्रोलिक सिस्टम को कन्वर्ट करेगा किसी मैकेनिकल मोशन में, जैसे कि इसको रोटेटरी इसने मूव करा दिया, पर्टिकुलर सिस्टम को लीनियरली मूव करा दिया, तो उस तरह के एक्चुएटर को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्चुएटर। सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर। इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर। सो रिले जो है एक इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल मोशन में, जैसे कि ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर हो गया। थर्ड क्लासिफिकेशन है न्यूमेटिक बेस्ड एक्चुएटर। न्यूमेटिक बेस्ड एक्चुएटर में हम क्या करते हैं, जनरली एयर का यूज करते हैं। सो यहाँ पे एयर का यूज किया जाता है या फिर वैक्यूम का, कंप्रेस्ड एयर या फिर वैक्यूम का यूज करते हैं, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसी मैकेनिकल मोशन। तो जनरली मैं बार बार यहाँ वर्ड में बोल रहा हूँ मैकेनिकल मोशन। तो यहाँ पे ज्यादातर जो एक्चुएटर वर्क करता है वो किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करता है। अब वो मैकेनिकल मोशन जो है कई टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि उसको हमने लीनियरली मूव करा दिया, किसी डिवाइस को हमने उसको सर्कुलरली मूव करा दिया, तो ये जो मैकेनिकली हो रहा है मैकेनिकल मोशन वो एक्चुएटर करता है। तो न्यूमेटिक बेस्ड में क्या हुआ, कंप्रेस्ड एयर या फिर वैक्यूम को बेस्ड जो वैक्यूम बेस्ड होता है वहां पे हम इसका यूज करके, एयर का यूज करके मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ क्लासिफिकेशन है थर्मल और मैग्नेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स। सो यहाँ पे हमें थर्मल या फिर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन फिर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी मैकेनिकल मोशन या फिजिकल आउटपुट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह के एक्चुएटर्स को बोलते हैं थर्मल या और मैग्नेटिक बेस्ड एक्चुएटर। फिफ्थ लास्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है एक्चुएटर्स का वो है हमारा हाइड्रोलिक हो गया, हमारा इलेक्ट्रिकल बेस्ड हो गया, हमारा न्यूमेटिक बेस्ड हो गया, थर्मल और मैग्नेटिक बेस्ड हो गया, एंड लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन है मैकेनिकल बेस्ड एक्चुएटर्स। सो यहाँ पे मैकेनिकल मोशंस को या मैकेनिकल थिंग्स को जो भी मैकेनिकली हो रही है
उसको हमें कन्वर्ट करना है किसी फिजिकल आउटपुट में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रोटेटरी मोशन को मूव जो है कन्वर्ट कर दिया लीनियर मोशन में। अगर हम सर्कली किसी चीज को मूव करा रहे हैं तो उसको हम लीनियरली मूव करा सकते हैं, तो ये मैकेनिकल बेस्ड एक्चुएटर्स हो गए। सो ये हमारे एक्चुएटर्स के 5 क्लासिफिकेशन है। यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज एक्चुएटर? एक्चुएटर का मतलब क्या है? किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल को कन्वर्ट करता है ये मैकेनिकल मोशन या फिर फिजिकल आउटपुट में। ओके, एक्चुएटर्स जो है इसको जनरली एक कंट्रोल सिग्नल की जरूरत होती है और दूसरा एनर्जी की जरूरत होती है। कंट्रोल सिग्नल हम इसको मैकेनिकल की फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में दे सकते हैं, ऑप्टिकल की फॉर्म में दे सकते हैं, या जो भी हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशंस देखे उनमें से कोई सा भी फॉर्म यूज कर सकते हैं कंट्रोल सिग्नल के लिए। और एनर्जी हमने दे दी, तो ये एक्चुएटर क्या करेगा? जो आप अगर ये दोनों चीजें उसे प्रोवाइड करोगे तो ये किसी भी सिस्टम को जो है कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाएगा, किसी भी सिस्टम को ये कंट्रोल कर सकता है। सो एक्चुएटर इज जनरली कंट्रोल अ सिस्टम बाय यूजिंग सम सिग्नल्स and convert them into a particular physical output. Okay, so मैंने आपको बताया कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है। माइक्रो कंट्रोलर एक स्मॉल टाइनी कंप्यूटर होता है जिसके अंदर सीपीयू, मेमोरी यूनिट्स और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स सारी चीजें अवेलेबल होती हैं एक साथ। सेंसर के बारे में मैंने बताया आपको कि सेंसर क्या करता है? सेंस करता है किसी फिजिकल एक्टिविटी और फिनोमिना को और उसको कन्वर्ट करता है सिग्नल्स के फॉर्म। एक्चुएटर्स क्या करता है? उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो उसे इनपुट के तौर पे मिल रही है उसे वो फिजिकल आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इन तीनों का यूज करते हुए मैं एक डिवाइस जो है एक डिवाइस बनाऊंगा और उस डिवाइस को हम स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट इन द सेंस कि वो ऑटोमेटेड डिवाइस। ऑटोमेटेड मीन्स हमने एक बार उसको प्रोग्राम कर दिया तो वो खुद ही जो है उस किसी भी जिस टास्क या जिस जॉब के लिए उसको प्रोग्राम किया गया है वो खुद ही उस जॉब को परफॉर्म करे जब भी वो जॉब हो रहा हो। सो दिस काइंड बी अ स्मार्ट डिवाइस, ऑटोमेटेड डिवाइस। For example, let's take an example that will clarify the concept. For example, अगर मुझे किसी लिविंग थिंग्स या प्रेजेंट पर्सन है तो अगर वो रूम में एंटर होता है, लेट्स से इस रूम में एंटर होगा तो उसके एंटर होते ही जैसे उसने गेट को लॉक करके गेट को खोल करके अंदर आया तो लाइट जो है ऑन हो जाए और वो जैसे ही इस रूम से बाहर जाए तो लाइट्स जो है ऑफ हो जाए। ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ IoT। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम माइक्रो कंट्रोलर जो कि एक बोर्ड होता है, जो कि एक स्मॉल टाइनी कंप्यूटर होता है, उसको हम प्रोग्राम कर देंगे। किस तरह से? इस तरह से प्रोग्राम करेंगे कि पर्सन के एंटर होते ही लाइट टर्न ऑन हो जाए और पर्सन के रूम से लीव करते ही लाइट जो है टर्न ऑफ हो जाए। देन आफ्टर प्रोग्राम फिर मैं क्या करूंगा? उस माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के ऊपर एक सेंसर रख दूंगा या एक से ज्यादा सेंसर को इनबिल्ट कर दूंगा उसके साथ, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, PIR सेंसर हो गया, जो कि किसी ऑब्जेक्ट के डिटेक्शन को जो है जनरली वो करे, मेजर करे, या फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करूंगा। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर, PIR सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर, अगर मैं इन तीनों सेंसर का एक साथ यूज करता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ जैसे मैंने इसको प्रोग्राम कर दिया, माइक्रो कंट्रोलर है, इसके ऊपर 3 सेंसर्स को इनबिल्ट कर दिया और माइक्रो कंट्रोलर को मैंने प्रोग्राम कर दिया विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक ऑब्जेक्टिव C++, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है मेरे पास। देन आफ्टर क्या करूँगा? अब मुझे ये मेरा प्रोग्राम हो चुका है बट ये फिजिकल आउटपुट में शो नहीं कर पाएगा, इसके लिए मुझे एक्चुएटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक्चुएटर्स के तौर पे क्या करूंगा? मैं एक रिले स्विच को रखूंगा। रिले स्विच को मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा, जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर का बोर्ड है जिसके ऊपर सेंसर लगा हुआ है उसके साथ मैं रिले स्विच को कनेक्ट कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ वायर्स। और उस रिले स्विच पे स्विच लगे होंगे जो कि इस पर्टिकुलर
इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इससे मिल रही है इसको, उसको वो फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा? अगर पर्सन जो है रूम के अंदर एंटर हो रहा है तो वो स्विच जो है ऑन हो जाए, मतलब स्विच प्रेस अपने आप हो जाए और लाइट टर्न ऑन हो जाए। जब वो रूम से लीव करे तो स्विच प्रेस हो जाए, मतलब लाइट जो है ऑफ हो जाए। तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर इसको टुगेदर एक साथ माइक्रो कंट्रोलर, इसका सर्किट बोर्ड के ऊपर सेंसर इनबिल्ट है, उसके साथ मैंने रिले स्विच को एक अटैच किया और इन दोनों को अटैच करते हुए मैंने इसको किसी पावर सोर्स से इसको वो कर दिया, चाहे वो लैपटॉप हो, पीसी, कंप्यूटर हो, मैं किसी से उसको अटैच कर सकता हूँ। तो मैंने कंप्यूटर से इसको अटैच कर दिया। अब जब भी कोई रूम में एंटर करेगा पर्सन तो लाइट डेफिनेटली टर्न ऑन हो जाएगी और रूम से अगर वो लीव करता है लाइट जो है ऑफ हो जाएगी। सो दिस विल बी अ ग्रेट एडवांटेज फॉर अस कि ये एक तरह का ऑटोमेशन टेक्निक है जो अपने आप ही रन हो रहा है, बस हमने क्या किया, उसको प्रोग्राम कर दिया। बट यहाँ पे एक चीज की प्रॉब्लम है कि ये जो है रियल टाइम बेस्ड है। रियल टाइम बेस्ड इन द सेंस कि हम यहाँ पे डेटा को कहीं पे भी सेव नहीं कर रहे। डेटा जो है रियलिटी में रियल टाइम पे यूज हो रहा है। तो अगर आपको डेटा को सेव करना है और सेव करने के बाद इसको कहीं आपने सेव किया और उसको डेटा को कहीं और आप यूज करते हुए इसको पर्टिकुलर ऑपरेट कर सकते हैं इस रूम को, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, IoT क्लाउड एंड कम्युनिकेशन, दैट इज नेटवर्किंग का जो है यूज करना पड़ेगा। तो फोर्थ जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसमें फोर्थ जो है हमारा वो भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज IoT क्लाउड एंड कम्युनिकेशन। So I think you got the point कि why we need IoT cloud and communication। अगर मुझे जो भी रियल टाइम में डेटा मिल रहा है उस डेटा को मुझे अगर सर्वर पे सेव करना है, सेव करने के बाद मैं उसको क्या कर सकता हूँ, अपने इस जो भी माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम किया है इसके लिए मैं एक ऐप बना सकता हूँ। वो ऐप किसी भी नाम से हो सकती है। तो उस ऐप से मैं क्या कर सकता हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में मैं कहीं पे भी हूँ मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि अगर कोई रूम के अंदर एंटर हो रहा है तो लाइट ऑन हो जाए, रूम के अंदर रूम से बाहर जा रहा है तो ऑफ हो जाए। और इस डेटा की मैं हिस्ट्री भी चेक कर सकता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे लिए है कि क्लाउड पे डेटा जो है कंटिन्यूअसली सेंड होता रहता है, तो इसकी हिस्ट्री भी मुझे पता चल जाएगी कि कितनी बार किसी ने रूम में एंटर किया और कितने टाइम उसने लीव किया। सो जो भी पर्सन रूम में एंटर हो रहा है उन सब की जो है एक तरीके से डेटा मुझे जो है सर्वर पे मिल जाएगा। सो डेटा के जरिए मैं इसको कभी भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता हूँ और दूसरा डेटा के जरिए मैं इसकी पूरा हिस्ट्री देख सकता हूँ कि मुझे आज के दिन में देखना हो कि मेरे रूम में कितने लोगों ने एंटर किया, तो वो भी मुझे पता चल जाएगा किस किस ने एंटर किया। तो कैमरा सेंसर की हेल्प से मैं देख सकता हूँ कि किस किस ने एंटर किया। सो दिस 4 थिंग्स विल मेक अ स्मार्ट डिवाइस। एंड अगर हम हर डिवाइस में इन चारों चीजों का यूज करें, मतलब माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर, एक्चुएटर और IoT क्लाउड एंड कम्युनिकेशन, तो हम हर डिवाइस को IoT बेस्ड बना सकते हैं, IoT बेस्ड सिस्टम तैयार कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे ही उठे, हम जैसे सोने जा रहे हैं, रात के टाइम स्लीप करने जा रहे हैं, तो लाइट को हमें मैनुअली टर्न ऑन ऑफ करने की जरूरत ना पड़े, लाइट अपने आप ऑफ हो जाए। हम जब उठते हैं तो लाइट ऑन हो जाए। हम जैसे कुछ फ्रिज के अंदर लेने जा रहे हैं तो अगर कोई चीज़, कोई फूड आइटम्स रनिंग लो है तो अपने आप वो मैसेज जो है मेरे मोबाइल पे आ जाए कि ये फूड आइटम्स जो है रनिंग लो है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको ले आके फ्रिज में रख दूँ। ये बेनिफिशियल एडवांटेज है। अगर मैं जैसे कि अपने गैरेज में अगर मैं कोई व्हीकल है, कार वगैरह है, तो मैं गैरेज से अगर व्हीकल निकालने जा रहा हूँ तो गैरेज अपने आप ओपन हो जाए, मेरे जाते ही प्रेजेंस होती, और जैसे ही मैंने कार अपने आप निकाली तो गैरेज अपने आप जो है शट डाउन हो जाए। सो इस तरह से हम धीरे धीरे करके कई तरह डिवाइसेस, ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस को IoT बेस्ड बना सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो आप एक्यूरेसी पा सकते हैं, सबसे बड़ी बेनिफिट तो ये है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जो होती है सडनली हम जो फॉरवर्ड कर जाते हैं, भूल जाते हैं कोई चीज़,
वो जनरली होगा नहीं। अगर आप फॉरवर्ड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने फ्रिज से कोई वाटर बोतल ली और आपने फ्रिज को बंद करना भूल गए, तो जैसे ही आप फ्रिज से थोड़ा सा दूर जाए फिर आपके मोबाइल में मैसेज आएगा कि यू डू नॉट क्लोज द फ्रिज। सो मैं क्या करूँगा, वापस से जाऊँगा और फ्रिज को क्लोज कर दूँगा। दैट विल बी अ ग्रेट एडवांटेज फॉर अस। तो इसी तरह से लाइफ में जितने भी डिवाइसेस हैं सबको हम IoT बेस्ड बना सकते हैं, और आने वाले टाइम में हर एक डिवाइस IoT बेस्ड होने वाली है, ये डेफिनेट श्योर है। 2030 35 ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस जो है IoT बेस्ड हो जाएंगे। ओके, सो IoT कोर्स जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा कोर्स है, इसको सीखने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। Hello friends, today we are going to talk about Arduino. What is Arduino? It is an open source platform which provides an IDE for programming Arduino circuits board. It also contains microcontroller which are basically small computers. This is the real image of an Arduino circuit board. You can see all its components clearly. Different microcontrollers used in Arduino board. Here are the names of all the microcontrollers that you can find on an Arduino board. This is one of the microcontroller of the Arduino board. Now let's check out different types of Arduino board. Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Mega 2560, Arduino LilyPad, Arduino Mega ADK, Arduino Fio, Arduino Ethernet, Arduino Pro, Arduino BT, Arduino Nano, Arduino Mini and Arduino Pro Mini. Now let's have some discussion about various components of the Arduino board. First, there is voltage regulator. Voltage regulator is used to control the voltage given to the Arduino board and stabilize the DC voltages used by the processor and various other elements. As you can see, it is placed here on the Arduino board. Then there is crystal oscillator. It is used in Arduino to deal with time issues and also to calculate time. Its frequency ranges from 16 MHz. Then there are analog pins. The Arduino Uno board has got 6 analog pins from A0 to A5, as you can see them in the image. Then there are microcontrollers. It is actually the brain of the circuit board and they are usually of Atmel company. Then there is power LED indicator. It is used to tell that your board is powered correctly. It will light up when you will plug your board to a power source. TX and RX pins. The TX and RX pins are used for transmitting and receiving the data respectively. They are located at 0 and 1 pin location of the board. TX and RX LEDs. These LEDs flashes with different speeds while sending and receiving the data respectively. Then AREF, which stands for analog reference. It is used to set an external reference voltage between 0 to 5 volts as the upper limit for the analog pins. Then ICSP. It is basically an AVR. It is a tiny programming header for the Arduino board. It is also considered as serial peripheral interface, which is the expansion of the output. Then there is power USB. You can provide power to Arduino board by using a USB cable. You can also upload your codes from your computer to the board through the help of the power USB. Then there is power barrel jack.
You can power Arduino board directly from the AC mains power supply by connecting it to the barrel jack. Then there is pin Win. This pin can also be used to power the Arduino board from an external power source such as AC mains power supply. There are various other pins also, like pin 3.3 volts, which supply 3.3 volts output. Then there is pin 5 volts, which supplies 5 volts output. And then there is pin GND, which is ground connection to the circuit. Thank you. There are various components on its board. So first, this is the voltage regulator. It is used to control the voltage given to the Arduino, and it stabilizes the DC voltage used by the processor and other element. The second one, this is the crystal oscillator. Crystal oscillator is used in Arduino to deal with time issues. It is used to calculate time, and its maximum frequency range is 16 MHz. Next, here are the analog pins. The Arduino Uno board has got 6 analog pins ranging from A0 to A5, and these analog pins are used to read analog signal and convert it into the digital value that can be read by the microprocessor. Next, this is the microcontroller. This is the brain of the circuit board. The microcontrollers are usually of the Atmel company. Here it is the Atmega 328P. Next component is the power LED indicator. This is the power LED indicator. It will light up when you plug your board to a power source, and when it lights up, it means that your board is powered correctly. Next component, we have the transmitter and receiver pins. The transmitter and receiver pins are used for transmitting and receiving the data respectively. These are located at pin number 0 and pin number 1 on the Arduino board, and they are responsible for serial communication. And further, we have the transmitter and receiver LED. The transmitter and receiver LED flashes with different speeds while sending and receiving the data respectively. The speed of flashing depends on the baud rate used by the board. Next, we have digital I/O pins. As you can see, the digital input output pin, you can say that the Arduino Uno board contains 14 digital I/O pins. These pins work as input digital pins to read the logic values, that is 0 or 1, or it can be used as digital output pins to drive different module like LEDs. Next pin here, it is a reference, that is Arduino reference pin, and you can thought it as the analog reference. The A reference is used to set an external reference voltage between 0 to 5 volt as the upper limit for the analog pins. And the next we have the ICSP pins. The ICSP basically in-circuit serial programming, which allows you to upload software to your microcontroller unit. It is a tiny programming header for the Arduino board. It is also considered as serial peripheral interface, which is the expansion of the output. And the next component we have here on the board is power USB. You can provide power to Arduino board using USB cable. You can also upload codes from Arduino IDE to Arduino board,
by using the power USB. Next, we have here the power barrel jack. You can power Arduino board directly from the AC main power supply by connecting it to the barrel jack. Next, it is the Arduino reset pin. Reset pin is used to start your program from the beginning. We can reset the Arduino board in two ways, by using this reset button, or simply you can use this reset pin. Here you can see it. We can also use this reset pin to reset our program, and also you can use this reset button here. Next we have the power pins here. Here we have 3.3 volt pin. It supply 3.3 volt output, and the 5 volt pin, it supplies 5 volt output. The ground pin, it is used to provide ground connections to the circuits, and V-in pin, it is used to power the Arduino board from an external power source like AC mains power supply. So these were the basic component introduction of the Arduino board. So thank you guys. We had an idea of the components on the board. Hello guys, welcome back to Edutainer. In this video, I'll show you how to download and install the Arduino IDE in your operating system. So let's get started. First, open your browser and search for Arduino. Just type and press enter. The search results will appear here. So just click on the first one. This is Arduino Home. Click on it. This is the official website of the Arduino. And to download the software, just go to the software section, click on downloads, and you will be redirected to the software section. And now scroll down. Now you can see here it's the option Windows app. So you can also install the app from Windows Store. So, and if you do not wish to do that, just install the Windows installer. Just click on this link. This is the Windows installer for Windows XP and up versions. So just click on this link, and now here in this section you can see the contribute to the Arduino software. So guys, this is the open source. The Arduino IDE is the open source platform. If you wish to contribute some money, or you can just pay some dollars if you want to, if you wish to do that. So just click on the option contribute and download. If you do not want to do that, just click on this option, just download. So just click on it. Okay, and now here you can see the Arduino IDE download has downloading process has been started. Here it will take time, so just wait for it and let it be download. Okay, so just wait. Now it's downloaded. So just open this executable file here. Just click on this Arduino IDE executable file. Now grant the permission and grant the control. So just give the control, and now here's it's the license agreement. Just click on I agree and follow the instructions. Next, and just install. Yes, it's right. And so now let the process run. Then we'll go step by step.
just wait for it, and after that we'll go step by step. So just wait for it to be 100%. Okay, now would you like to install this device software? Yes, install. We want that, obviously. Now click on this install. Okay, so you should only install driver software from publisher you can trust. These are the option, always trust. Okay, so just click on install and it will install the Arduino IDE. So just close this and just click on this icon. You can see here, over the desktop, the Arduino. Now it's starting. So it's a very simple process. Now you can see this Arduino IDE. Yeah, so this is our Arduino IDE. You can see the default functions are there, the void setup function, void loop function. So inside the void setup function we put the code to run it once. So if you want to initialize something or want to declare, so you have to write the code inside the setup function. It will run at once while uploading the program. And next, in void loop function, inside void loop function we write the code to run it repeatedly. As you can see, put your main code here to run repeatedly. So now I have to connect my laptop with the Arduino hardware. So to show you the serial monitor, so I need to connect it. I have the Arduino Uno, so I'm going to connect it. Okay, let me do this. Okay, I have connected the Uno, and now you can see the COM port also. Here's the port number COM3 Arduino Uno. Yes, if you insert the hardware correctly, you can see the port number, and you have to select the correct board. So it's already selected, so no need to do it. And now I'll show you the simple program to print something on serial monitor. So I'm going to write this simple program, serial dot begin. Inside bracket just write the baud rate. Yeah, serial dot begin. It will start the serial monitor, and here inside the loop I'm going to print something. So just write serial dot print line, serial dot print line. I'm going to print welcome to edutainer So this particular code will print this line repeatedly on serial monitor. So just compile it, and you need to save this file. If you do not wish to do that, just click on cancel. Here you can see this, it's compiling a sketch. Okay, if your code is error free, it will compile the code. So compiling is done. Now I'm going to upload it to the Arduino Uno that is connected to my laptop. Again, I do not want to save it, so I just clicked on cancel, and you can see here it's uploading. Yeah, it's done uploading. It's done. Now you can see the serial monitor. Just go to the tools option, click on serial monitor, and here you can see this line welcome to edutainer is continuously printing on serial monitor. So that's how you can install and download the IDE and start with the basic programming with your IDE. So thank you guys, and keep learning. Hello friends, today we are going to talk about basic programming.
First of all, let's discuss the program structure. We use void setup for running program only once at the start of the program. Then we use void loop that runs every time. Now let's check out digital input output. We use digital read, digital write and pin mode. Digital read reads the value from the digital pin either high or low. For example, int x equals to digital read 7, which returns either high or low. Then there is digital write to write a high or low value to a digital pin. For example, digital write 3, high, which returns nothing. Pin mode. It configures the pin to behave as either input or output. For example, pin mode 3, output, which returns nothing. Then there is analog input output, for which we use analog read, analog reference and analog write. Analog read. It reads the value from the analog pin. For example, int x equals to analog read 7. It returns 0 to 123. Then analog reference. It configures the reference voltage used for analog input. For example, analog read default. It returns nothing. Then there is analog write, which writes an analog value to an input pin. For example, analog write 5, 100, which returns nothing. Then for time we have delay, delay microseconds, micro s, milli s functions. First talk about delay function. It pauses the program for some amount of time in milliseconds. Example, delay 1000, which returns nothing. Then there are arithmetic operators like addition operator, multiplication operator, subtraction operator, division operator and remainder operator. Addition operator. It adds two operands and gives their sum. Example, int a equals to 10 plus 20 semicolon. Syntax will be add equals to operand 1 plus operand 2. It would return the value of the sum. Now subtraction operator. It subtracts one operand from other operand. Like int a equals to 20 minus 10. Syntax will be sub equals to operand 1 minus operand 2. It would return 10 as the final value. Then in case of multiplication operator, the operand will be multiplied to each other and the product would be the answer. Example, int a equals to 20 star 10. Syntax will be product equals to operand 1 into operand 2. Then there is division operator, which divides one operand to the other operand and gives the product. Example, int a equals to 20 divided by 10. In this case, the value that would be returned is 2. Remainder operator. It finds the remainder when one operand is divided by other. Int a equals to 20 percentage sign 10. Thank you. Hi everyone, welcome to the Edutainer. In this lecture I am going to teach you about sensors. What is sensor? So let me take a brief about sensor. Sensor is nothing but it takes physical activity or phenomena as input and it senses it and then produce a signal. So सेंसर क्या करता है?
किसी फिजिकल एक्टिविटी या फिनोमिना को सेंस करता है एंड देन आफ्टर प्रोड्यूस अ सिग्नल्स। दिस सिग्नल्स, ये सिग्नल्स जो हो सकते हैं किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आइदर इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और ऑप्टिकल सिग्नल्स, और मैकेनिकल सिग्नल्स in mechanical form, etc. So physical activity or phenomena means something change in the surrounding or environment. तो जो भी चेंज होगा उसको सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा। सेंस करने के बाद वो उसे किसी सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सिग्नल्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में हो सकते हैं, ऑप्टिकल के फॉर्म में हो सकते हैं, मैकेनिकल के फॉर्म में हो सकते हैं, थर्मल या मूवमेंट के फॉर्म में हो सकते हैं, एनी फॉर्म में हो सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सिग्नल जो है हम इसको रीड कर सकते हैं। सो इट इज नथिंग बट चेंज। फिजिकल एक्टिविटी इज नथिंग बट चेंज। एक ऐसा चेंज है, इस चेंज को क्या करता है सेंसर, सेंस करता है, और आफ्टर दैट इसे कन्वर्ट करता है सिग्नल्स की फॉर्म। और वो सिग्नल्स जो होते हैं रीडेबल होते हैं, रीडेबल सिग्नल्स। सो ह्यूमन बीइंग के लिए वो सिग्नल जो होते हैं रीडेबल होते हैं। तो जो भी हमारे सराउंडिंग या हमारे एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, जो भी हमारे सराउंडिंग या एनवायरनमेंट में हमारी चेंज हो रहा है, उस चेंज को जो है सेंसर क्या करता है, सेंस करता है, और सेंस करने के बाद उसे पर्टिकुलर कन्वर्ट करता है सिग्नल्स के फॉर्म में, जिस सिग्नल्स को हम रीड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस रूम में प्रेजेंस हूँ, तो मेरा प्रेजेंस होना भी एक जो है फिजिकल एक्टिविटी है, और इस फिजिकल एक्टिविटी को अगर मैं सेंसर के जरिए सेंस करूँ एंड देन उसे फिर कन्वर्ट करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस रूम में प्रेजेंस हूँ, तो मेरे प्रेजेंस होते ही रूम की लाइट्स ऑन हो जाए, एंड देन आफ्टर लिविंग दिस रूम, अगर मैं इस रूम से बाहर जाता हूँ तो लाइट जो है टर्न ऑफ हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया है इसको सेंसर ही कर सकता है। सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा मेरे प्रेजेंस होने की, कैसे, मेरे बॉडी की हीट के जरिए। और जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरी बॉडी की हीट प्रेजेंट नहीं रहेगी, तो सेंसर उसको सेंस नहीं कर पाएगा। तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सेंसर का यूज कर सकते हैं। तो सेंसर इसी प्रकार से कई तरीके से यूज किया जा सकता है। अगर हम IoT के बारे में बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए सेंसर एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स है। विदाउट the use of sensors there would be no automation, there would be no automation। ऑटोमेशन जो है बिल्कुल पॉसिबल, देयर वुड बी नो ऑटोमेशन पॉसिबल अगर सेंसर का यूज नहीं करेंगे तो ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं होगा। और ऑटोमेशन जो है हमें IoT के लिए जरूरत है। IoT के केस में हमें ऑटोमेशन चाहिए, तो ऑटोमेशन के लिए हमें सेंसर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेंसर है। तो सेंसर का मतलब होता है किसी फिजिकल एक्टिविटी या फिनोमिना को अपने सेंसर के जरिए हमें सेंस कराया और उससे फिर सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कराया। ओके, नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर। बिफोर गोइंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर, हमारे बॉडी पार्ट्स में भी 5 टाइप्स के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला सेंस ऑर्गन होता है हमारी आई साइट, जिसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ साइट। सो सेंस ऑफ साइट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को देख सकते हैं। इसको बोलते हैं SOS, सेंस ऑफ साइट। सेकेंड हमारे बॉडी पार्ट का जो ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल हम नोज के जरिए कर सकते हैं। जैसे हमें किसी प्रकार की अगर स्मेल आ रही है, बुरी स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है, तो वो हमारी नोज जो है फाइंड आउट करती है, उसको सेंस करती है। थर्ड सेंस ऑफ ऑर्गन है हमारा सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट,
सेंस ऑफ टेस्ट का मतलब कि जो भी फूड या जो भी हम लिक्विड इनटेक करते हैं अपने माउथ के जरिए, तो वो फूड या लिक्विड पर्टिकुलर टेस्टी है या स्पाइसी है या जो भी जिस तरह का टेस्ट है उसका टेस्ट हमें पता चलता है हमारे टंग्यू से। तो जो टंग्यू है हमारी वो एक तरह का सेंस ऑफ टेस्ट जो है फाइंड करती है कि पर्टिकुलर कैसा टेस्ट आ रहा है। फोर्थ हमारा सेंस ऑर्गन है सेंस ऑफ साउंड। सेंस ऑफ साउंड मतलब हमारे ईयर्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को सुन सकते हैं। कोई भी आवाज होती है, चाहे वो आवाज लाउड हो चाहे वो आवाज थोड़ी सी स्लो हो, उस आवाज को जो है उस साउंड को जो है हम सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंस, हमारे ईयर्स के जरिए। तो इसे बोलते हैं सेंस ऑफ साउंड। एंड द लास्ट इज सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच मतलब हम किसी भी चीज को अगर टच करते हैं तो हमें फील होता है कि हम उसको टच कर रहे हैं। जैसे अगर हमने किसी गर्म चीज को टच किया तो वो हॉट चीज से हमें लगेगा कि हाँ ये हॉट है, तो हम उससे जल्दी से दूर हटते हैं। या कोई कोल्ड चीज है, कोल्ड चीज को हमने टच किया तो हमें पता चलता है कि वो चीज जो है कोल्ड है। तो ये सेंस ऑफ टच। तो ये बॉडी के किसी भी हिस्से से टच होता है तो हमें वो फील होता है, तो सेंस ऑफ टच हो गया। तो ये 5 टाइप्स के हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो ये है नेचुरल जो हमें बाय डिफॉल्ट हमें मिले हुए हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का सेंसर ही है, बट ये नेचुरली इसको हम हमारी बॉडी यूज करती है। लेकिन ये वाला जो सेंसर है, इस सेंसर को हम यूज करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर। Now let's come into classification of sensor. So basically sensors are classified into 2 types. First is based on output. Based on output, sensors are classified into 2 types. First one is analog sensor and the second one is digital sensor. Okay, and second classification is based on data type. Based on data types. Based on data type, the sensors are again classified into 2 types. First one is scalar sensor, okay, and the second one is vector sensor. So let's first learn based on output what the analog sensor and the digital sensor, and then after we discuss the based on data type sensors. So let's first see what is analog sensor. In analog sensors, the output is always in analog form. मतलब ये है कि इस एनालॉग सेंसर में जो भी आउटपुट आपको मिलेगा वो एनालॉग की फॉर्म में मिलेगा। एनालॉग की फॉर्म से मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो भी सिग्नल मिलेगी वो सिग्नल का नेचर जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल का मतलब आप समझते ही कि अगर कंटिन्यूअस सिग्नल को मैं डायग्रामेटिकली शो करूं तो इसकी जो वेव फॉर्म रिप्रेजेंट होती है वो कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट होती है इस तरह से, जैसे कि हमारी साइन और कोसाइन वेव रिप्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे कहीं भी बीच में ब्रेक्स नहीं होता है, ये कंटिन्यूअसली जो है वेरी करती है। अपर हाफ में पॉजिटिव रहेगा, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव का जो साइकिल है ये चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। सो इस तरह के सिग्नल्स को हम कंटिन्यूअस सिग्नल बोलते हैं। कंटिन्यूअस सिग्नल जो है
वो जनरली एक तरह के एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। तो एनालॉग फॉर्म में अगर आपको आउटपुट शो करना है तो उसके लिए आपकी जो सिग्नल्स होनी चाहिए वो कंटिन्यूअस सिग्नल होनी चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सिग्नल होगी तो ही आप उसको एनालॉग फॉर्म में शो कर सकते हैं, और उस तरह के आउटपुट को हम बोलते हैं एनालॉग सेंसर। समझ में आया? एनालॉग सेंसर का एग्जांपल हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एनालॉग सेंसर पे शो कर सकते हैं जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं सच एज फिजिकल quantities such as temperature, pressure, strain, displacement, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि जिनका नेचर हमें हमेशा कंटिन्यूअस होता है एक्सेट्रा। सो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज का अगर नेचर कंटिन्यूअस होगा तो इसका आउटपुट जो आएगा वो एनालॉग की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इससे इसका यूज हम जो है एनालॉग सेंसर के लिए कर सकते हैं। तो टेम्परेचर सेंसर होता है, जैसे टेम्परेचर में कंटिन्यूअसली वेरी होता है, ठीक है। प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें भी कंटिन्यूअसली वेरी होता है। स्ट्रेन फोर्स एक तरह से फोर्स है, इस फोर्स में भी हमेशा जो है कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट जो मूव कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी जो है कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। इस तरह से और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका नेचर जो है कंटिन्यूअस होता है। सो इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज का नेचर जो है कंटिन्यूअस है। इस बेस पे इनसे जो भी रिजल्ट मिलेगा वो एनालॉग की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनालॉग सेंसर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एनालॉग सेंसर क्या होते हैं? एनालॉग सेंसर एक ऐसे सेंसर होते हैं जिनके आउटपुट जो हमेशा एनालॉग की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। एनालॉग की फॉर्म में अगर आपको आउटपुट चाहिए तो उसके लिए जो सिग्नल आपको मिलेगी वो सिग्नल का नेचर कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब अगर आप उसका वेव फॉर्म जनरेट करेंगे तो उसका वेव फॉर्म इस तरह से होगा। ये वेव फॉर्म किस तरह का वेव फॉर्म है? साइन या कोसाइन, इस तरह का ट्रायंगुलर वेव फॉर्म से होते हैं। उस वेव फॉर्म को हम कंटिन्यूअस वेव फॉर्म कहते हैं। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, इन सब की क्वांटिटी जो है हमेशा कंटिन्यूअस इन नेचर होती है। तो इस बेस पे हम जो है इनके आउटपुट हमें मिलेंगे वो एनालॉग फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी डिजिटल सेंसर्स। Second classification is digital sensing. Based on output, our second classification is digital sensor. So, what is digital sensor? In digital sensor, the output is always in digital form. डिजिटल फॉर्म का मतलब है यहाँ पे आउटपुट जो होगा हमेशा ऑन या ऑफ के फॉर्म में होगा। तो आउटपुट इज ऑलवेज इन डिजिटल फॉर्म, और डिजिटल फॉर्म से मेरा मतलब है आइदर ऑन और ऑफ। ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। सो अगर इस फॉर्म में आपका आउटपुट आता है तो उस तरह के आउटपुट को हम बोलते हैं डिजिटल आउटपुट, और उस तरह के पर्टिकुलर आउटपुट के लिए हमें डिजिटल सेंसर की जरूरत पड़ती है। नाउ डिजिटल सेंसर में एक और नेचर होता है, जैसे कि एनालॉग सेंसर के अंदर जो आउटपुट सिग्नल्स होते थे वो उनका नेचर हमेशा कंटिन्यूअस होता था। तो जो वेव फॉर्म जनरेट होती थी वो भी हमेशा कंटिन्यूअस इन नेचर, बट यहाँ पे जो वेव फॉर्म जनरेट होगी उसका नेचर होगा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट
सिग्नल्स जनरेटेड। अब डिस्क्रीट सिग्नल्स क्या होते हैं? ऐसे सिग्नल्स जो कि ब्रेक करके प्रोड्यूस्ड हो, जैसे कि कुछ टाइम के बाद फर्स्ट टाइम उसने कुछ वैल्यू शो कर ली, फिर कुछ टाइम तक वो वैल्यू ड्रॉप हो गई, फिर उसके बाद उसने शो की, फिर ड्रॉप हो गई। तो वैल्यू जो है, वैल्यू में सर्टेनिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, वैल्यू जो है रैंडम अमाउंट के बाद जो है प्रोड्यूस हो रही है। तो उस तरह की वैल्यूज को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल्स, या उस तरह के पर्टिकुलर। जैसे अगर मैं इसको जनरेट करूँ इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यूज यहाँ इस तरह से शो होंगी। तो ये एक्चुअल में क्या है, वैल्यूज है। और फिर यहाँ पे इस तरह से वैल्यू शो होगी। तो हम यहाँ पे पूरी की पूरी इस कर्व की वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ कुछ वैल्यूज को ही ले रहे हैं। तो ये कुछ वैल्यूज को ही लेना मतलब कि ये कंटिन्यूअस इन नेचर इसका है, तो इसका मतलब है कि डिस्क्रीट नेचर है, डिस्क्रीट इन नेचर है। तो इस तरह के सिग्नल्स को जो है हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। और डिस्क्रीट सिग्नल ही जो है डिजिटल फॉर्म में आते हैं। तो डिजिटल के लिए हमें डिस्क्रीट सिग्नल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसी डिस्क्रीट सिग्नल की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक डिजिटल सेंसर जो है मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, डिजिटल सेंसर बना पाएंगे, ठीक है। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज हो गई आपकी, फिजिकल quantities such as speed, distance, speed हो गया, distance हो गया, then pressure sometimes also has discrete value etc. So ऐसी quantities, इन quantities का जो nature होता है वो most of the time जो होता है वो discrete होता है। तो उस बेसिस पे जो इनसे आउटपुट निकलेगा वो डिजिटल फॉर्म में निकलेगा, या फिर जो भी एनालॉग सेंसर फिजिकल क्वांटिटी, मैंने आपको एनालॉग सेंसर के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी, उन फिजिकल क्वांटिटीज को से भी हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर रैंडम टाइम पे वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं और उसको डिजिटल फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटीज जिनका नेचर डिस्क्रीट हो उन्हीं को यूज किया जाता है। जिनका कंटिन्यूअस है उनको भी हम एज ए डिजिटल आउटपुट के तौर पे शो कर सकते हैं। ओके सो मैंने यहाँ पे आपको बेस्ड ऑन आउटपुट दो फॉर्म्स बताया, दो टाइप्स के सेंसर बताया। एक सेंसर मैंने बताया आपको एनालॉग सेंसर और दूसरा बताया डिजिटल सेंसर। तो एनालॉग सेंसर के बारे में क्या होता है कि एनालॉग सेंसर क्या करता है, इसमें आउटपुट हमेशा आपको एनालॉग की फॉर्म में मिलेगा, मतलब कंटिन्यूअस इन नेचर होना चाहिए सिग्नल्स का। और डिजिटल सेंसर क्या होगा, डिजिटल सेंसर के अंदर आउटपुट जो हमेशा डिजिटल की फॉर्म में मिलेगा। डिजिटल मतलब कि ऑन या ऑफ। तो अगर आप जैसे ऑन करते हैं तो मतलब कि आप 1 बिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर आप ऑफ कर रहे हैं मतलब आप 0 बिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सेंसर के अंदर जो है डिजिटल फॉर्म में आउटपुट मिलता है, एनालॉग सेंसर के अंदर एनालॉग फॉर्म में आउटपुट मिलता है। डिफरेंस दोनों में ये है कि बट एनालॉग के अंदर जो सिग्नल होगा वो कंटिन्यूअस इन नेचर होगा, बट डिजिटल के अंदर जो सिग्नल होगा वो डिस्क्रीट इन नेचर होगा। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन एक्सेट्रा, जो भी मैंने फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी एनालॉग के अंदर, उनका नेचर कंटिन्यूअस होगा, तो उसको हम एनालॉग सेंसर के लिए यूज कर सकते हैं। उसकी इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिजिटल के लिए भी यूज कर सकते हैं।
क्योंकि डिजिटल में हमें सिर्फ वैल्यू शो करनी होती है एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो डिजिटल सेंसर के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर उसकी पर्टिकुलर डिजिटल वैल्यू को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेस्ड ऑन आउटपुट। नाउ लेट्स सी अनदर classification of sensor. Now let's see the second classification of sensors. Second classification of sensor is based on data types. So based on data types, we have classified sensors two types. First one is scalar based sensor, and the second one is vector based sensor. Now let's learn what is a scalar based sensor. So in a scalar based sensor, the sensor produces an output signal or voltages which is generally proportional to the magnitude. So here सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हमें सफिशिएंट होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो उस तरह के सेंसर को, उस तरह की पर्टिकुलर वैल्यूज जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस हो रहा हो, वहाँ पे हमें स्केलर सेंसर की जरूरत पड़ती है। तो किस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज सच एज temperature, pressure, okay, color, strain, etc. So ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही रिजल्ट शो करती हैं। इनका डायरेक्शन या ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अगर टेम्परेचर, अगर मुझे किसी रूम का टेम्परेचर जो है मेजर करना है, तो वो मैं किसी भी पर्टिकुलर रूम के किसी भी कोने जो है पर्टिकुलर कोने में ले जाकर उसको मेजर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर रूम के एक डायरेक्शन पे अलग टेम्परेचर मिलेगा, दूसरे डायरेक्शन पे अलग टेम्परेचर मिलेगा। टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द होल रूम। उसी तरह से प्रेशर भी जो है कांस्टेंट रहता है, कलर भी और स्ट्रेन। इसकी मैग्नीट्यूड जो है सिर्फ चेंज होती है, डायरेक्शन जो है विदाउट द यूज ऑफ विदाउट वरीइंग अबाउट डायरेक्शंस। सो दिस आर द क्वांटिटीज व्हिच ओनली depend on magnitude, not on directions. So these are scalar sensors. Now second classification is vector sensor. So vector sensor में क्या होता है, जो भी आउटपुट सिग्नल या वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो जनरली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज ओरिएंटेशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे जो भी आपका सिग्नल प्रोड्यूस होगा वो सिग्नल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा और एज वेल एज ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। एज वेल एज ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज हो गई हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज सच एज साउंड। साउंड जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ सकती है, हो सकता है नॉर्थ डायरेक्शन से आ सकती है, हो सकता है ईस्ट डायरेक्शन से आ सकती हो, या फिर वेस्ट या फिर साउथ, किसी भी डायरेक्शन से साउंड हमें आ सकती है। तो पर्टिकुलर चीज एक डायरेक्शन से ही साउंड आ सकती है या फिर अलग अलग डायरेक्शन से साउंड आ सकती है। उसी तरह से वेलोसिटी हो गई, इमेज हो गया, इमेज भी जो कैप्चर होता है वो ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, सारी चीजों पे बेस्ड होता है, किस ओरिएंटेशन पे बेस्ड है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी जो होता है हमारा एक डायरेक्शन बेस्ड है।
सो ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये सारी जो है मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं, इसीलिए हमें इन पर्टिकुलर क्वांटिटीज को जो है वेक्टर सेंसर के में यूज करते हैं और इसके जरिए आप कोई भी वेक्टर सेंसर बना सकते हैं। जैसे कि एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरोमीटर होता है, ठीक है। इमेज के लिए हम इमेज अगर हमें किसी लेना है तो कैमरा सेंसर की हेल्प से हम इमेज कैप्चर कर सकते हैं। तो ऐसे हम इस तरह की पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ओरिएंटेशन तीनों की बात हो वहाँ पे वेक्टर सेंसर हो गया। और ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो वहाँ पे स्केलर सेंसर की हम डिस्कस करते हैं। तो स्केलर सेंसर में जैसे कि टेम्परेचर हो गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन और ओरिएंटेशन, टेम्परेचर जो हमें थ्रू आउट द रूम पूरे रूम में एक जैसा मिलेगा। प्रेशर भी हमें पूरे होल रूम में एक जैसा ही मिलेगा विदाउट वरिंग अबाउट डायरेक्शन और ओरिएंटेशन। कलर सेम रहेगा इस पूरे टेम्परेचर रूम का। स्ट्रेंथ फोर्स भी लगभग सेम रहता है। सो स्केलर सेंसर जो है एक ऐसा सेंसर है जो सिर्फ जिसमें कि मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, बल्कि और उसके अपोजिट में वेक्टर सेंसर में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज ओरिएंटेशन तीनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर सेंसर और वेक्टर सेंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमने सेंसर की क्लासिफिकेशन में दो तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ी। पहला क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन आउटपुट। तो आउटपुट में दो तरह के सेंसर्स थे, एक तो एनालॉग सेंसर जिसमें कि एनालॉग फॉर्म में आउटपुट आता था, दूसरा हमारा था डिजिटल सेंसर जिसमें डिजिटल फॉर्म की आउटपुट आता था। दूसरा जो है हमारा बेस्ड ऑन डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के आधार पर भी हमने दो तरह के सेंसर पढ़े थे। फर्स्ट है स्केलर सेंसर। स्केलर सेंसर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट होती थी किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। दूसरा क्लासिफिकेशन था वेक्टर सेंसर। वेक्टर सेंसर में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज ओरिएंटेशन की भी जरूरत पड़ती थी, ठीक है। नाउ अब सेंसर की फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि सेंसर का फीचर क्या होता है। फीचर्स ऑफ सेंसर। सो सेंसर के फीचर में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है it is only sensitive to the measured property means इसका मतलब ये हुआ कि सेंसर जो भी सेंसर हम डिजाइन कर रहे हैं वो सेंसर किसी एक प्रॉपर्टी के लिए ही सेंसिटिव होगा। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर सेंसर की बात करें तो टेम्परेचर सेंसर सिर्फ टेम्परेचर को ही मेजर कर सकता है, वो और किसी दूसरी प्रॉपर्टीज को मेजर नहीं कर सकता। तो ये इसका फर्स्ट फीचर होता है। सेकंड फीचर है इट इज नॉट सेंसिटिव to other properties। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि जिस भी प्रॉपर्टीज के लिए हम सेंसर को डिजाइन करते हैं वो उसी प्रॉपर्टी को मेजर कर पाता है। इसका मतलब कि वो दूसरी प्रॉपर्टीज को जो है सेंस नहीं कर पाएगा, मेजर नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर सेंसर की बात कर रहे थे तो टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर को मेजर कर पाएगा, ठीक है। और लाइट क्या है, कलर क्या है, प्रेशर क्या है, वो उसके बारे में बॉदर नहीं करेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द मेजर्ड प्रॉपर्टी। इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द मेजर्ड प्रॉपर्टी मीन्स कि जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर का काम टेम्परेचर को मेजर करना है
उसे इन्फ्लुएंस नहीं करना है। इन्फ्लुएंस का मतलब कि उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है। जैसे कि अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है तो 40 डिग्री सेल्सियस ही वो रिपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि 40 डिग्री सेल्सियस से उसे 50 कर देगा, 60 कर देगा या फिर -40 -30 इस तरह से कर देगा। तो वो पर्टिकुलर जो भी प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज या डिक्रीज ना करे, एक्चुअल करेक्ट वैल्यू बताए। तो ये 3 जो है पर्टिकुलर पॉइंट्स जो होते हैं वो सेंसर के फीचर्स होते हैं। पहला कि जिसके लिए जिस प्रॉपर्टी के लिए उसे डिजाइन करते हैं वो उसी को मेजर करता है। दूसरा, वो किसी और प्रॉपर्टी को मेजर नहीं करता है, सेंसिटिव नहीं होता उसके। और तीसरा, वो उस प्रॉपर्टी को जो है पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस नहीं करता है। सो ये थे सेंसर के फीचर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Next point is resolution of a sensor. Resolution of sensor. So what is the resolution of a sensor? Resolution of a sensor is the smallest change that it can detect in the quantity that it is measured. So ये एक smallest change होता है जिसको ये मेजर करता है। तो इसका बेनिफिट क्या है? सो फर्स्ट थिंग पॉइंट लिख लेते हैं कि ये इट इज द स्मॉलेस्ट चेंज। इट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इट कैन डिटेक्ट in the quantity being measured. सो ये है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ सेंसर की डेफिनेशन कि स्मॉलेस्ट चेंज होता है। रिजोल्यूशन ऑफ अ सेंसर इज द स्मॉलेस्ट चेंज इट कैन डिटेक्ट इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। नाउ इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर हम रिजोल्यूशन को हाई करेंगे सेंसर के तो उसकी प्रेसिशन भी जो होगी वो भी और ज्यादा हाई होती है। तो इंक्रीजिंग resolution of sensor will produce more precise value, of output। तो सेंसर के अगर हम रेजोल्यूशन को हाई करते हैं तो उसकी आउटपुट जो होगी, उसकी प्रेसिशन जो होगी वो और ज्यादा हाई होगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। बट आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर इसका हम प्रेसिशन बढ़ाते हैं तो प्रेसिशन बढ़ाने से ये नहीं होगा कि उसकी एक्यूरेसी हाई हो जाएगी। एक्यूरेसी उसकी हाई नहीं होगी। उसकी एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी ये डिपेंड नहीं करता है रेजोल्यूशन पे। एक्यूरेसी एक अलग टर्म है। एक्यूरेसी के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रेसिशन को बढ़ा सकते हैं, प्रेसिशन को हाई कर सकते हैं। प्रेसिशन मतलब जो वैल्यू है वो और ज्यादा शार्प हो सकती है। ठीक है, तो आउटपुट हमारा और अच्छा आ सकता है और अच्छा शार्प आ सकता है। तो पर्टिकुलर जो प्रेसिशन है उसको सिर्फ हम इंक्रीज कर सकते हैं इस रेजोल्यूशन के जरिए। ओके, एक्यूरेसी को नहीं कर सकते। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Now the last topic in sensor is transducer. Before transducer, let me give some examples of sensors. There are various examples of sensors. Light based sensor. First one is light based sensor.
So in light based sensor, the sensor are used to detect the light. For example, light detection resistor sensor. So LDR एक तरह का ऐसा सेंसर है जो किसी भी लाइट को डिटेक्ट करता है. तो LDR एक सेंसर होता है. नेक्स्ट जो है हमारा फोटो डायोड भी एक सेंसर होता है. So these are the light based sensors. Second is temperature based sensor. टेम्परेचर बेस्ड सेंसर क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल थर्मिस्टर एक प्रकार होता है ट्रांजिस्टर का, इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. सेकेंड इज थर्मोकपल. थर्मोकपल का यूज जो है जनरली गीजर्स में यूज करते हैं. ये भी जनरली क्या करता है? टेम्परेचर को मेजर करता है. सो यहाँ पे हम मेटालिक स्ट्रिप्स का यूज करते हैं. ये मेटालिक स्ट्रिप्स जो क्या करती हैं? टेम्परेचर को मेजर करती हैं गीजर्स के अंदर. थर्ड वन इज स्पीड बेस्ड सेंसर. स्पीड बेस्ड सेंसर मीन्स जो कि जनरली स्पीड को मेजर करे. और स्पीड आप जानते हैं, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम. ये होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम में, वो हमारी स्पीड होती है. तो स्पीड को मेजर करने के लिए जनरली हम जो सेंसर यूज करते हैं, एक तो हो गया रिफ्लेक्टिव ऑप्टो कपलर. ये एक स्पीड बेस्ड सेंसर है. सेकंड है हमारा डॉपलर इफेक्ट सेंसर. Okay, so these are the examples of speed based sensor. Fourth one is force based sensor. What is force based sensor? ऐसे सेंसर जो कि फोर्स को मेजर कर सकें. और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है हमारा मास इनटू acceleration. Mass means weight, acceleration is velocity per unit time. ये हो गया mass into acceleration. So mass into acceleration is generally force होता है. तो force को measure करने के लिए हम कुछ सेंसर यूज करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया स्ट्रेन गेज हो गया. स्ट्रेन गेज एक ऐसा सेंसर होता है जो कि फोर्स को मेजर करता है. एग्जांपल्स हो गए प्रेशर स्विच भी फोर्स को मेजर करता है. Okay, so these are the sensors which used to measure the force. Fifth one is sound based sensor. साउंड बेस्ड सेंसर जो कि साउंड को मेजर करे. साउंड को मेजर करने के लिए हमारे पास जो है साउंड को मेजर करने के लिए हमारे पास जो सेंसर होते हैं जनरली साउंड को मेजर करने के लिए हमारे पास जो सेंसर होते हैं, फर्स्ट वन इज कार्बन माइक्रोफोन. जो नॉर्मल माइक्रोफोन हम यूज करते हैं, जैसे कि ये वाला ये एक माइक्रोफोन है. तो इस तरह के माइक्रोफोन को हम जनरली इसके अंदर एक सेंसर लगाते हैं, कार्बन माइक्रोफोन. तो ये क्या करता है? साउंड को मेजर करता है. दूसरा एग्जांपल हो गया पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. ये भी साउंड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. सिक्स्थ वन इज केमिकल बेस्ड सेंसर. केमिकल बेस्ड सेंसर जो कि केमिकल को डिटेक्ट करे. जैसे कि अगर लिक्विड में केमिकल को डिटेक्ट करना हो तो हम लिक्विड केमिकल सेंसर यूज करते हैं. लिक्विड केमिकल सेंसर.
और अगर गैस में डिटेक्ट करना है तो हम गैसियस केमिकल सेंसर का यूज करते हैं, गैसियस केमिकल सेंसर। ओके, एंड द लास्ट वन इज, फर्स्ट क्या था आपके पास, लाइट, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर, देन स्पीड, फोर्स, देन साउंड, देन केमिकल, देन लास्ट वन इज पोजीशन। पोजीशन जनरली किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटेक्ट करेगा रिलेटिव टू पर्टिकुलर सेंसर। तो पोजीशन के लिए हो गया पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा सेंसर है जो कि पोजीशन को डिटेक्ट करता है। उसके बाद से हो गया एनकोडर्स। एनकोडर भी एक ऐसा सेंसर है जो कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटेक्ट करता है। So these are the general examples of a sensor which based on different properties। जैसे कि अगर मुझे लाइट डिटेक्ट करना है तो LDR या फिर फोटोडायोड का यूज कर सकता हूँ। टेम्परेचर डिटेक्ट करना है तो थर्मिस्टर या थर्मोकपल का यूज कर सकता हूँ। अगर स्पीड मेजर करनी है तो रिफ्लेक्टिव ऑप्टोकपलर या फिर डॉपलर इफेक्ट सेंसर का यूज कर सकता हूँ। फोर्स मेजर करना है तो स्ट्रेन गेज या फिर प्रेशर स्विच का यूज कर सकता हूँ। ओके, अगर साउंड मेजर करना है तो कार्बन माइक्रोफोन या फिर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का यूज कर सकता हूँ। केमिकल सेंसर यूज करना है तो उसके लिए मैं लिक्विड में अगर केमिकल को जो है मेजर करना चाहता हूँ, डिटेक्ट करना चाहता हूँ तो लिक्विड केमिकल सेंसर हो गया। गैस की फॉर्म में डिटेक्ट करना चाहता हूँ तो गैसियस केमिकल सेंसर हो गया। एंड द लास्ट वन इज पोजीशन बेस्ड सेंसर। पोजीशन के लिए एग्जांपल हमने लिया है पोटेंशियोमीटर और एनकोडर। सो दीज आर द जनरल क्लासिफिकेशंस। सो सेंसर के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी। नाउ नेक्स्ट एक टॉपिक है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सेंसर का डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ट्रांसड्यूसर भी जानना जरूरी है, क्योंकि मैनी टाइम्स क्या होता है कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर में कंफ्यूजन होती है। सो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि पर्टिकुलर किसी एक एनर्जी फॉर्म को हम दूसरी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ट्रांसड्यूसर की जरूरत पड़ेगी। सो ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स, और यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स भी कभी कभी यूज किया जाता है, ट्रांसड्यूस। ट्रांसड्यूस मीन्स कन्वर्जन। Transfuse or converts energy of one form into other form। So ट्रांसड्यूसर क्या करता है, कन्वर्ट्स और ट्रांसड्यूस एनर्जी ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। मेनी टाइम्स वो हैपन है कि ट्रांसड्यूसर को हम एज अ सेंसर समझ लेते हैं कि सेंसर भी एक तरह का ट्रांसड्यूसर डिवाइस है, बट ऐसा नहीं है। ट्रांसड्यूसर जो है वो कलेक्टिवली सेंसर और एक्चुएटर्स दोनों के लिए एक साथ यूज किया जाता है। अगर हम दोनों टर्म्स को एक साथ यूज करें, सेंसर और एक्चुएटर्स, तो फिर ये ट्रांसड्यूसर कहलाएगा। कैसे? सेंसर जनरली अगर मैं किसी फिजिकल इनपुट को या एक्टिविटी को जो है कन्वर्ट करता हूं सिग्नल्स की फॉर्म में, लेट्स से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया किसने? सेंसर। और एक्चुएटर क्या करेगा? एक्चुएटर इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा, इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है फिजिकल आउटपुट को, फिजिकल आउटपुट में, फिजिकल आउटपुट। सो अगर हम बोथ टर्म को कलेक्टिवली
एक साथ बोले तो फिर ये ट्रांसड्यूसर है। इंडिपेंडेंटली दोनों एक साथ ट्रांसड्यूसर नहीं कहला सकते। सेंसर एक ट्रांसड्यूसर नहीं होता है, या एक्चुएटर एक ट्रांसड्यूसर नहीं होता है, दोनों मिला के ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। सो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ट्रांसड्यूसर और सेंसर जो है एक ही टर्म है, दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो ये हमारा सेंसर का टॉपिक था। सेंसर में हमने पढ़ा, सबसे पहले मैंने सेंसर के बारे में आपको बताया कि व्हाट इज सेंसर। सेंसर क्या करता है, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी या फिनोमिना को जो है सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उस सिग्नल्स को जो है हम रीड कर सकते हैं। वो सिग्नल्स चाहे इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में हो, चाहे फिर वो ऑप्टिकल की फॉर्म में हो, या फिर मैकेनिकल की फॉर्म में हो, एक्सेट्रा। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंसर बताया। टाइप्स ऑफ सेंसर मैंने आपको ये बताया कि सेंसर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट पार्ट था हमारा बेस्ड ऑन आउटपुट, और सेकंड पार्ट था हमारा बेस्ड ऑन डेटा टाइप। बेस्ड ऑन आउटपुट को हम फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एनालॉग सेंसर और डिजिटल सेंसर। एनालॉग सेंसर जो है हमारे एनालॉग फॉर्म में आउटपुट जनरेट होती है, मतलब वहाँ पे कंटिन्यूअस सिग्नल्स की जरूरत पड़ेगी, जबकि डिजिटल फॉर्म में हमारे जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो डिजिटल जनरेट होते हैं। यहाँ पे ऑन और ऑफ की बात होती है, मतलब यहाँ पे डिस्क्रीट सिग्नल जनरेट होगा। अगर हम बेस्ड ऑन डेटा टाइप की बात करें तो डेटा टाइप में मैंने आपको बताया कि दो तरह के सेंसर्स होते हैं। पहला सेंसर हमारा था स्केलर सेंसर। स्केलर सेंसर में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। इसमें एग्जांपल हो गया टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, ये सारी चीज़ों में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही जो है सफिशिएंट होता है। और वेक्टर सेंसर के बारे में बताया। वेक्टर सेंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं होता, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन और उसका ओरिएंटेशन भी देखना पड़ता है। जैसे कि साउंड हो गया, इमेज हो गया, कलर हो गया। सो ये सारी चीज़ें जो है हमारी वेक्टर सेंसर है एक तरीके से, मतलब इन फिजिकल क्वांटिटी से हम वेक्टर सेंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि सेंसर के फीचर्स क्या होते हैं। सेंसर के फीचर मैंने आपको 3 फीचर्स बताए सेंसर्स के जनरली। पहला फीचर्स हमने पढ़ा था कि सिर्फ वो उसी प्रॉपर्टी को सेंस कर सकता है जिसके लिए उसको डिज़ाइन किया गया। जैसे टेम्परेचर सेंसर है तो वो सिर्फ एम्बिएंट टेम्परेचर को ही सेंस कर सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये बताई कि वो दूसरी प्रॉपर्टीज को के लिए इनसेंसिटिव होता है, मतलब दूसरी प्रॉपर्टीज को सेंस नहीं कर सकता, मेजर नहीं कर सकता। जैसे टेम्परेचर सेंसर डज नॉट बॉदर अबाउट लाइट और प्रेशर। उसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, थर्ड प्रॉपर्टी थी कि इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द मेजर प्रॉपर्टी। मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे टेम्परेचर सेंसर जो है टेम्परेचर को बढ़ा या घटा नहीं सकता, उसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट वही वैल्यू उसको रीड करके हमें जो है दिखाएगा आउटपुट के तौर पर। देन आफ्टर सेंसर फीचर्स मैंने आपको बताया कि रिजोल्यूशन ऑफ अ सेंसर, कि सेंसर के रिजोल्यूशन क्या होते हैं। सेंसर का रिजोल्यूशन क्या होता है कि स्मॉल चेंज होता है जिस क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, और इसका फायदा क्या है, जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन आप बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू की प्रेसिशन बढ़ेगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इससे एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि एक्यूरेसी एक अलग फैक्टर होता है और इसके लिए कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो सिर्फ हम प्रेसिशन को बढ़ा सकते हैं, रिजोल्यूशन को बढ़ाएंगे तो ये रिजोल्यूशन ऑफ अ सेंसर हो गया। देन नेक्स्ट मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स, जैसे कि फर्स्ट वन हमने देखा था लाइट सेंसर। लाइट सेंसर में मैंने आपको बताया LDR, फोटो डायोड, ये सब लाइट सेंसर थे। सेकंड आपको मैंने बताया टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर में मैंने आपको बताया जैसे कि थर्मिस्टर हो गया, थर्मोकपल हो गया, दिस आर दिस टेम्परेचर सेंसर। थर्ड मैंने आपको बताया फोर्स बेस्ड सेंसर, जिसमें कि प्रेशर स्विच हो गया, स्ट्रेन गेज हो गया, ये सब क्या करते हैं, फोर्स को मेजर करते हैं। फोर्स का मतलब आप समझ रहे हो कि मास इनटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स। फोर्थ वन इज हमारा जो था वो था स्पीड बेस्ड। स्पीड बेस्ड मतलब जो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है उसको मेजर कर सकते। तो अगर स्पीड को मेजर करना हो तो उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था डॉपलर इफेक्ट सेंसर और रिफ्लेक्टिव ऑप्टोकपलर सेंसर। सो ये हमारी स्पीड बेस्ड सेंसर थे। सिक्स्थ था हमारा साउंड बेस्ड सेंसर। साउंड बेस्ड सेंसर में हम क्या करते थे, साउंड को मेजर करते थे। साउंड को मेजर करने के लिए हमारे पास कार्बन माइक्रोफोन सेंसर है, हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, ये हमारा फिफ्थ सेंसर हो गया। सिक्स्थ है हमारा केमिकल बेस्ड सेंसर। केमिकल बेस्ड सेंसर में हम केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। अगर आपको लिक्विड में डिटेक्ट करना है तो लिक्विड केमिकल सेंसर, अगर आपको गैस की फॉर्म में डिटेक्ट करना है तो गैसियस केमिकल सेंसर।
एंड द लास्ट वन इज पोजीशन बेस्ड सेंसर, जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को मेजर करते हैं कि वो कितनी दूर है किसी पर्टिकुलर सेंसर से, जो पोजीशन बेस्ड सेंसर है। तो पोजीशन बेस्ड सेंसर हो गया हमारे पोटेंशियोमीटर, एनकोडर्स, दिस आर द पोजीशन बेस्ड सेंसर्स। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सेंसर्स, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स हैं, अनगिनत। हम जितने फिजिकल एक्टिविटीज और फिनोमिना हो सकती हैं उन सब पे हम एक सेंसर बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं सेंसर को कई पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सेंसर की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार पढ़ेंगे। एंड उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको ये बताया कि ट्रांसड्यूसर जो है, सेंसर को ट्रांसड्यूसर नहीं कहना जो है पूरी तरह से गलत है। सेंसर और ट्रांसड्यूसर दो अलग अलग टर्म्स है। ट्रांसड्यूसर एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बट सेंसर जो है लिमिटेशंस है उसकी, वो पूरी तरह से नहीं कर पाता। तो सेंसर और एक्चुएटर को अगर एक साथ हम यूज करें कंबाइंडली तो फिर वो ट्रांसड्यूसर कहता है। ठीक है। अब जैसे कि नॉर्मल अगर मैं कॉमनली यूज्ड सेंसर की बात करूँ तो कॉमनली यूज्ड जो हमारे सेंसर होते हैं, जैसे कि हो गया टेम्परेचर सेंसर। तो टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब टेम्परेचर 3 यूनिट्स में हम मेजर करते हैं, साइंटिफिकली केल्विन में मेजर किया जाता है, नॉर्मल डिग्री सेल्सियस, और अगर हम या फिर फ़ारेनहाइट, ये 3 यूनिट्स में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज द ह्यूमिडिटी सेंसर, ये भी एक कॉमनली यूज्ड सेंसर है। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि मॉइस्चर और एयर दोनों के कंटेंट को ये मेजर करता है एक साथ। कैसे? इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात आ जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? moisture presence in the ratio of the moisture presence in the air to the highest amount of the moisture in the air। मतलब कि मॉइस्चर का एयर में कितना रेशियो है उसको अगर हम डिवाइड कर दें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है, और इसी के बेस पे हम जो है ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह से हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है? ऑब्स्टिकल डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारा पर्टिकुलर है या नहीं। वैसे ही PIR सेंसर है, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। पैसिव इंफ्रारेड सेंसर को हम मोशन बेस्ड सेंसर के रूप में यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास PIR सेंसर है और मैं इस अपने हैंड को PIR सेंसर के पास ले जाऊं इस तरह से, तो अगर मैंने इसमें लाइट लगा रखी है तो लाइट जो है उसकी लाइट की फ्लो की जो स्पीड है वो कम और ज्यादा होती जाए डिपेंड ऑन माई मूवमेंट ऑफ माई हैंड्स। सो ये मूवमेंट मतलब मोशन जो हो रहा है मेरे हैंड्स का उसकी वजह से यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो PIR सेंसर इसके लिए यूज किया जाता है, मोशन बेस्ड सेंसर के लिए। नेक्स्ट इज द प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इट इज अ वेरी पॉपुलर सेंसर क्योंकि ये मोबाइल फोन्स वगैरह में, स्मार्टफोन्स हो गए हमारे पर्टिकुलर लैपटॉप्स वगैरह, कार वगैरह में यूज किया जाता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करते हैं? इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर हमें कोई कॉल आता है तो अगर हम उसको अपने ईयर के पास ले जाते हैं तो ये हमें डिटेक्ट करता है कि हाँ ऑब्जेक्ट है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइट्स जो है ऑफ हो जाती है और हम इजीली टॉक कर सकते हैं किसी को। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज हो गया। उसी तरह से वेरियस सेंसर्स है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। Hello friends, today we are going to talk about LED. LED stands for Light Emitting Diode. It is a semiconductor device which emits light when an electric current is passed through it. Actually, it has two junctions named P and N. Basically, these junctions are between an anode and a cathode. The current flows easily from the P side to the N side, but never in the reverse order. This is the image of an LED. You can clearly see the cathode, which is the shorter leg, and the anode, which is the longer leg. Now, inside an LED, there are exposé lens case, wire bond, reflective cavity, semiconductor die, anvil post, which is lead frame, and flat spot. Now, these are the various types of LEDs available in the market. You can see they are available in many shapes and sizes.
Now, this is the circuit diagram. It shows the connection of an LED. This is an LED, this is a resistor. Now, what is diode? Diode is a two-terminal electronic component that conducts current primarily in one direction. It has low, ideally zero resistance in one direction and high resistance in the other. This is the symbol of a diode. What are cathode and anode? The anode of a device is the terminal where current flows in from outside. The cathode of a device is the terminal where current flows out. Cathode displays negative, anode displays positive. This is the symbol of flow of current. Now, what are the advantages of LED? LEDs are now capable of outputting 135 lumens per watt, 50,000 hours or more if properly engineered. LEDs do not wash out colors like other light sources such as fluorescents, making them perfect for displays and retail applications. LEDs can be controlled for brightness and color. Nowadays, you can also find various LED TVs. LEDs do not approximate a point source of light, but rather Lambert-Eaton distribution. LEDs must be supplied with a voltage above the threshold and a current below the rating. LEDs are currently more expensive. Most cool white LEDs have spectra that differ significantly from a black body radiator like the sun or an incandescent light. Now, this is LED and this is Arduino. You can see how the connection works between an LED and an Arduino. And this is LED work with Arduino and resistor. This is Arduino, this is a resistor, this is an LED. On a breadboard, the connections have been made. Thank you. So today our objective is to make this simple LED blinking project, and for this project we need some components. The first one, this Arduino Uno board. I will connect the LED to pin number 3 of the Arduino, and we need this breadboard to make the connections on the breadboard, and we will connect LED with Arduino by placing this LED on this board. And you will require an LED, that is light emitting diode. This LED has got two pins. The longer pin is known as positive pin and the other one, shorter one, is the negative pin of this LED. And these pins are also known as anode and cathode. The positive is anode and the negative one is the cathode of this LED. Before making the connection, make sure the positive and negative pins. Now I have this resistor. This is a 220 ohm resistor. You will require the resistor to make LED blinking project safe. LED will not burn out. For this purpose I am using this. So I have next these two jumper wires to make these connections, and next final I will be using this USB cable to upload the code to the Uno board. So first I'm starting by placing this LED on the breadboard. So, and ensure that the positive and negative pin of this LED. So let me place it, and now we'll connect this resistance to the positive pin of the LED, and you need to bend it. So just connect it to the positive pin of the LED, and now I'll connect this
LED with digital pin number 3 of the Arduino by using this connecting wires. So let me do this. Now I'm going to connect it to the pin number 3. So let's do it. Just place it like this at the one end of resistance and other to the pin number 3, and now I'll connect the LED negative pin with the ground of the Arduino. You can use any ground pin of Arduino to connect the negative pin, so you can connect it anywhere, and now our setup is completed. I'm going to connect the Arduino with my laptop using this USB cable. So let's see the coding part. Now as you can see, the setup and the loop function are already written here. Whenever you take a new file in Arduino IDE, the setup and loop function will be there. Now let's first declare pin 3. As you know, we have set our LED to pin number 3 on Arduino Uno board. So we first declare a variable int pin and set it to value 3, means initialize it with value 3 here. So here in this line we have declared an integer variable with name pin and initialize it with value 3. Then inside this setup function, we are setting this pin variable to output. So for that we need to use pin mode command. So we are writing here pin mode pin and we are setting it to output. So by writing this line, we are telling the compiler to set the pin variable to output. Now we need to write the logic for making the LED blink. For that we need to first turn on the LED and then wait for some time and make it turn off. For that we need to write some code. So let's do it. By writing this line digital write pin high, we are telling the compiler to make the pin number 3 on the Arduino Uno board and set it to high. Then we wait for around 1000 milliseconds by using the delay function. Then again we set it to low and then again wait for 1000 milliseconds. So according to our program logic, we are first turning the LED on and then wait for 1000 milliseconds, then turn it off and then again wait for 1000 milliseconds. So that's it. So now let's save our program first. So let's save it with the name. I'm saving it on the desktop itself. LED blink. So it is saved. Now we need to compile this program. It has successfully compiled. Now we need to upload it. Before uploading, always check your port number. So we have set it to port number 12. And it has successfully uploaded. And you can see this LED is blinking. So that's how you can make the very simple project of LED blinking. Thank you guys and keep learning. So here in this project I'm going to show you how to make this multiple LED blink. And now let's start with this Arduino Uno board. We require this Arduino Uno board to connect our LEDs. And now next you will need this breadboard to place these LED on the board, and by using some jumper wires you will connect it. And now we have next we will require two LEDs to make it blink. One is green and other one
is red. So this was the, and next I have these two resistance, that how to calculate the resistance value. And now these two resistance are 220 ohm, we will use it. And next I have some jumper wires to make these connections out. Now let's begin with the connections. Let's make these connections. Now let's place these LEDs on the breadboard. So first ensure and identify these pins, the positive one and the negative one. Just place it on board, and similarly the second LED, this is the positive one and this is the negative leg, and place it similarly on the board, and these LEDs are placed. And now I'll connect the resistances to the both of the LEDs leg, and that to that positive leg obviously. So just connect it to the positive leg of the LED. It is done. And now I'll connect the second resistance to the green LED, and similarly in same manner I'll connect it to the positive of this green LED, and this is done. Now we'll connect this setup to Arduino by using some jumper wires. So let's connect it. Just connect the LED, one LED to digital pin number 3, and I'm going to connect it to the green LED's resistance, and this is connected. Now connect this second red LED to the pin number 4. You can use it, you can use any pin, but here I am using pin number 3, and connect the other end, to this LED's resistance. And now we'll connect the negative pins of these LED and we'll make it to ground. So let's connect it to the ground. So let me do this and connect the negative pin of red LED to the ground, and similarly I'm going to connect the negative pin of this green LED to the ground as well. So just do it, it's very simple. Let me connect this to the negative of this green LED. So now the all pins of these LEDs are connected and our setup is done. So it was a simple connections. So now I am going to connect the Arduino with my laptop by using this USB cable. This end will go to the Arduino board. So let me connect this to the USB port of the Arduino. Okay. So now let's write the code for making the multiple LEDs blink. First we will declare variable pin1 and initialize it with value 3. So int pin1 and initialize it with value 3. Then we will declare another variable pin2 and initialize it with value 4. As you know, we have set our LEDs to pin 3 and 4 of Arduino Uno board, so I have done this. Then inside the setup function, first we will use the pin mode function to set pin 1 to output. So pin mode pin 1 to output. Then again set the pin 2 variable to output.
pin mode, pin 2, output. By writing these lines, we are telling the compiler to set the pin number 3 and 4 on Arduino Uno board to output. Now inside the loop function, we first set the pin number 3 on Arduino board to high using digital write command. So digital write pin 1 high. Then we set the pin number 4 on Arduino Uno board to low using the same digital write command. Pin 2 low. Then we wait for 1000 milliseconds using the delay function. Then again we are going to write this same logic in reverse order. So digital write pin 1 low, digital write pin 2 high, and then wait for 1000 milliseconds. That's it. According to our program logic, the LED connected to pin number 3 will be turned on and LED connected at pin number 4 will be turned off. Then wait for 1000 milliseconds and LED at pin number 3 will be turned off and LED at pin number 4 will turn on. And again wait for 1000 milliseconds, and this process will continue. So our program logic is clear, and at the first LED at pin number 3 will be on and LED at pin number 4 will be off. Then again the LED at pin number 3 will be off and LED at pin number 4 will be on. So now let's save it. So I am saving it on desktop with multiple LED name. So it is saved successfully. Now we need to compile it. So I am compiling it here, and as you can see, it has successfully compiled. And now we need to upload it. So it has uploaded successfully. You can see how these LEDs are blinking. So you can observe the output. These LEDs are glowing and blinking also. So our project is done. Thank you guys, and keep learning. Hello friends, today we are going to talk about potentiometer. First of all, let's check out what is a potentiometer. It is an instrument which is designed to measure an unknown voltage by comparing it with a known voltage. You can also define it as an electrical instrument that is used to measure the EMF, that is electromotive force, of a given cell. They are even used in high quantities in the manufacture of electronics equipment. Let's move forward. So, why is potentiometer chosen over voltmeter? When we use voltmeter, current flows through the circuit, and because of the internal resistance of the cell, always terminal potential will be less than the cell potential. Now, in such a circuit, when the potential difference is balanced, no current flows in the circuit. Thus, the terminal potential will be equal to the actual cell potential. So, we can understand that the voltmeter measures the terminal potential of a cell, but potentiometer measures the actual cell potential. Here's a diagram for your help. This is the procedure for constructing a potentiometer. It consists of a long resistive wire L made up of magnesium or with constantan and a battery of known EMF volt. The voltage is called as driver cell voltage.
you can check out the entire procedure and construct your own potentiometer. Let's check out the diagram. So here's the diagram. The basic working principle of this is based on the fact that the fall of the potential across any portion of the wire is directly proportional to the length of the wire. Let's move forward. Here are a few types of potentiometer. First is single turn pot. It has single rotation of approximately 270 degrees. Then there is multi-turn pot, which offers multiple rotations for higher precision. Then dual gang pot. It is two potentiometer combined on the same shaft and it allows parallel setting of two channels. The next is concentric pot, which is a dual potentiometer where two potentiometers are individually adjusted through concentric shafts. The last is servo pot, which is a motorized potentiometer and can be automatically adjusted by a servo motor. These are the images for your reference. Now let's talk about the applications of potentiometer. It can be found in voltage divider, audio control, television, transducer, and many more others. Thank you. So guys, our objective is to control the LED brightness by using the potentiometer with an Arduino. So we require this Arduino Uno board to connect our LED with its digital pin, and we also need this potentiometer. As you can see, this is the knob of a potentiometer and there are three pins. As you can see, there are three pins and the both side pins are the fixed end and the second one is the variable end of this potentiometer. You can rotate this knob to increase or decrease the resistance, and also there is a fixed resistance value between these two terminal. And next we have this LED, the positive pin and the negative pin of the LED you already know. And here I'll use the 220 ohm resistor again to connect our LED to Arduino pin, and we require this breadboard to place these connections and obviously some jumper wires to connect the breadboard connections to the Arduino Uno board. So first I'll connect this LED on breadboard, identify the positive and negative pins and insert it into the holes of the breadboard. And now I'll use this 220 ohm resistance to connect it to the positive pin of LED. You need to bend this resistance from each side to place it easily on breadboard. So okay, it's done. And now I'll connect this LED to the Arduino and I'll use the pin number 3, the digital pin number 3 of the Arduino to connect it to the positive of LED through this 220 ohm resistance. So just need to do this. And now I'll connect the other pin, the negative pin of this LED, to the ground pin of our Arduino. You can use any ground pin of Arduino to connect it with the negative of this LED. So it's done. Now I'll connect this potentiometer to our circuit. So just insert these three pins on the breadboard. So just press it, and now I'll connect this potentiometer middle end pin
that is the variable end, to the V in pin of this Arduino, that is analog, that is that is input voltage of the Arduino. So connect V into the variable end, and I'm now going to connect the other two ends to 5 volt and ground pin respectively. So let me connect this one end to the 5 volt of the Arduino pin, just like this, and so it's done. And now I'll connect the other one to the ground pin of the Arduino, just to make it ground. Just connect it. Okay, let me do this. So now it's connected. So it's simple connections. Now I'm going to connect this Arduino with my laptop by using this USB cable. So let me connect this. Okay, so I'm going to connect it with the USB port of my laptop. This end will go to the USB port. Okay, yeah, yes, you can see that's done. So here is the coding part, and I have written the code over here. So let's start with this very first line, int led is equals to 3, because I have connected the LED to the Arduino pin number 3. So I have initialized and declared the LED as 3, and this is the variable pin, this var pin. This is a variable of integer type. I have stored the value, I have initialized it to 0, and inside the setup function the serial.begin line will start the communication. Means you can monitor the output on serial monitor. This pin mode function will set our LED, that is your pin number 3, to the output using this using this output function. It will set the LED to use as a output pin. Then inside the loop function, to run the code repeatedly, I have created a variable of integer type, that is sensor value, that will read the value of variable pin by the potentiometer. That will be your analog read using this analog read function. So I have stored this value in this sensor value in variable. After that, cause this will return the digital the analog readings from between 0 to 1023. So we need to convert it. So I have here declared a variable voltage, that is of float type, that will be storing the value and converting it to the voltage by using this formula. Again, in this serial.print line voltage, I have used this line to print the voltage on serial monitor. After that, here I have created the variable that is of integer type named as value, to map the sensor values, because this line will map the result to a range from 0 to 255 to range of 1 to 1024. And after that, this particular line will write the value in this LED, that is your pin number 3. So that's how this code will going to work. So hope you guys have got it clearly.
Now you can see our LED is glowing, and now I'll vary the brightness of this LED by using the knob. So just rotate in clockwise, it will increase the brightness of this LED. Yeah, and now if I rotate it in opposite direction, it will dim the light. Okay, yeah. So that's how you can control the LED brightness by using the potentiometer. Okay, so thank you guys, hope you have got it clearly. Now in this video series, I'll show you how to use the photo sensor using the Arduino. So let's get started with the Arduino. So you are already familiar with it. This is the Arduino Uno, and another thing, the breadboard, you have used it many times. So and an LED, you have already done a project with it, and this is the longer one is the positive and negative pin of the LED. And the main component, this is the photoregister. This is the photoregister here I am using to control the light. A photoregister is a photoresistor is a kind of a resistor. It works on the principle of photoconductivity. Whenever light falls on it, the resistance decreases, and whenever light intensity goes low, the resistor increases. So this is the working principle of the photoresistor. And here the another component I'm using, there are two 220 ohm resistors, sorry. Here are two 20 ohm resistors, and these are of value 220 ohm. You can use it of any value by calculating it. So here I am using 220 ohm, and after that I have an USB cable. You already used it, so I will connect to this laptop. This is the complete component. So let's make the connections. So just place components on the circuit on the breadboard, sorry. So better place it here. So just place the photoresistor on the breadboard, and your LED, ensure that this is the longer one is a positive pin of LED and the shorter one is negative. Yeah, you already know that. So just place this, and the resistance I'm using here, so just connect the resistance to the one leg of photoresistor. Yes, this is let me connect this. Now connect another 220 ohm resistor to LED, just like this. So I just take this. Now we will connect this breadboard to the Arduino board. So now first connect the Arduino 5 volt to the one leg, the one leg of the photoresistor, and now ground. Connect the ground to the to make it ground photoresistor to the Arduino. Now let's connect and give. I'm going to give the analog input, so that's why I'm connecting it to analog pin A0 to the middle pin, and that is here. I'm connecting it through the resistor to give the analog input to the photoresistor. And let's connect LED. So I am here using pin number 3 as the input to LED. So this is the pin number 3 as an input.
And now let's connect the ground of the LED, that is the negative pin of LED, to the ground of the Arduino. So it's the ground of the Arduino. Now you can place it here. So our setup is complete. Okay, let's connect this USB cable to the USB port of the Arduino, and the another one to the laptop USB port. So let me just connect this. So connect it, and now you can. So now let's start the coding part. First we will declare two variables here, one photoregister and initialize it with value A0. Then I am going to write int LED and initialize it with value 3. Then inside the setup function, I will set the photoregister to input using the pin mode function. So pin mode, and to input. We are writing this line to tell the compiler to receive input from the photoregister, means set the pin number A0 to input. Then by the same pin mode function, we are going to set the LED to output. Then inside the loop function, first we will read the input from the photoregister. For that, we initialize a variable data and use the analog read function. So here in this line, we are reading the data or the resistance of the photoregister using the analog read function and storing it in a variable data. Then we need to check whether the variable data has a value greater than 1000 or not, means the resistance returned by the photoregister is greater than 1000 or not. For that, we are going to use if keyword. If data greater than 1000 else. So here we are checking whether the data or the resistance of the photoregister is greater than 1000 or not. So if it is greater than 1000, then we need to turn on the LED, and if it is less than 1000, then we need to turn off the LED. Sorry, that's it. So according to our program logic, we are reading the data from the photoregister, and using the if statement, we are checking if the data returned by the photoregister is greater than 1000 or not. If the data returned by the photoregister is greater than 1000, means the resistance of the photoregister is very high, means there is less light, so we need to turn on the LED. For that, we are using this digital write command and turning it on. Then if the data returned by the photoregister, means the resistance of the photoregister is less than 1000, then there is sufficient light, so we need to turn off the LED. So we are turning it off using the digital write function. That's it. Now we need to save it. I have already saved it with the photoregister name. Now let's compile it and upload it. Wait for some time. It has uploaded successfully. And just get connected. Let me just show you how this gonna be work. So you can see, as I am covering this photoregister, the resistance get decreases and the light gets on, and after that with the intensity. So this is the varying effect of it. Let me show you how can you use in real life. Let me switch off the lights, and now you will observe the LED will glow. Let me switch off. So now you can see the LED, our LED is glowing. Now if I am turning on the LED on, so it will be
it will be turned off. So you can see that you can deploy this project anywhere in your room. So that's the was the our project aim. Thank you for this. Hello friends, here we are going to talk about ultrasonic sensor. What is an ultrasonic sensor? It is a device that measures the distance of an object using ultrasonic sound waves. It is a transceiver module. It contains both transmitter and receiver. That's why it is called as transceiver module. Working of ultrasonic sensors. First, it transmits high frequency ultrasonic waves of frequency greater than 20 kHz and receives the waves reflected by the obstacle. Then it converts the electrical signal into ultrasonic signals using transmitter. And finally, it converts the ultrasonic signal into electric signals using receiver. This is the image of HCSR04 ultrasonic sensor. Here it is the transmitter and here it is the receiver. What is ultrasound waves? Ultrasound is an oscillating sound pressure wave with a frequency greater than the upper limit of human hearing range. These waves are not different from normal sound, but humans can't hear them. Ultrasound devices operate with frequency from 20 kHz to several GHz. Working principle. It works similarly like radar or sonar. It evaluates the attributes of target by interpreting the echoes of ultrasound waves. In short, it generates sound waves of high frequency and evaluates the echo which is received back by the sensor. Now, here's the working principle. The source, original signal and the echo signal and the object. Applications. It is used to measure distance of objects. It is also used to measure the level of liquid or water. It can also be used to measure the presence of anyone. Obstacle avoiding robot. It is one of the project that has used the ultrasonic sensor. This robot can avoid obstacle and move in the right path. Now, the cars having parking sensors works on ultrasonic sensors only. They can detect if there is any other car or object around the vehicle. Now, this image shows working of ultrasonic sensors with Arduino. Here it is Arduino Uno and here it is ultrasonic sensor. You can see how the connections have been made with 5-volt ground connection, pin 1 and 2. Thank you. So okay, now next project we have we will learn about how to use ultrasonic sensor with Arduino. So first of all, we need several components. As you already know, a breadboard, you are familiar with it already, and a microcontroller, that is Arduino Uno board. We are currently continuously using it, so you are familiar with it. And also this LED, you know it better, the positive one and the negative one. So this is the component, the main component which we will be using it to calculate and measure the distances, ultrasonic sensors. The ultrasonic sensor uses the ultrasonic waves to measure the destinations. So like here we have it works like transmitter as well as the receiver. It has 4 pin. As you can see, there are 4 pins. The pin is VCC, ground, and one is echo, and third one is the trigger pin. So this has the 4 pins, and how it works: whenever an object it emits the ultrasonic waves with
which goes to the object, and it receives the reflected waves. So this is how it works. So now let's get started with the project. So now I'm going to make this connection out. So first of all, place this ultrasonic sensor on the breadboard as let me place this and press it. Now what there is a simply 4 pin, you can connect it to the Arduino, as simple as that. Just take this VCC pin. I'm going to connect this pin number 1, that is VCC of this ultrasonic sensor, to the 5 volt of the Arduino. So it is done, and now I'm going to connect pin number 4, that is ground pin, to make it ground to the ground of the Arduino. And now let's connect the trigger and echo pin. So to connect this trigger and echo pin, I need to use the digital pin number 9 and 10. So I will be using, I'm going to connect trigger pin to the pin number 9 of the Arduino. So this is pin number 9, and now let's connect pin number 10, that is the echo pin number 10 of the Arduino, to the echo of the ultrasonic sensor. So now the ultrasonic part is complete. Let's connect the LED. So the longer one is the positive and the shorter one is the negative pin of LED. So just place it on breadboard, and I just placed it. Now connect. Here I am using digital pin number 3 to connect our LED. So let's connect this pin number 3 to the LED's positive pin, that it is a positive one, and the negative pin to the ground. So just use the ground pin to connect the negative of the LED. So it's short, so I'm using this pin as a ground. So this is the complete setup for using the ultrasonic sensor. So hope you guys get it clear. Now the connection. Now connect this to your USB port of the Arduino, and the other one to the USB port of your laptop, and you will see how this ultrasonic sensor works. So let's start the coding part. So here first I am going to declare two variables, int trig 9, int echo 10. So here I have declared two variables, int trig and echo, and initialize them with value 9 and 10 respectively. Then inside the setup function I am going to use serial.begin function to set the baud rate to 9600. Then by using pin mode function I am going to set the trig variable to output, and the same pin mode function set the echo variable to input. So that's it. Here I have set the pin number 9 on Arduino Uno board to output using the pin mode function, and
pin number 10 as input using the same pin mode function. Now inside the loop function, I am going to declare two variables, long duration dur and distance. Then by using digital write function, I am going to set trig to high and then wait for 1000 microseconds. Then again set it to low. Then I need to get the duration. So for that I use the pulse in function. So pulse in echo high. Then distance dis, whatever duration I have get, dur divided by 2 divided by 29.1. That's it. So now with that being written, I need to do some logic on the distance which I have get. So I check if the distance returned is distance dis return is less than 10, then I am going to set the pin number 3 on Arduino Uno on which our LED is connected to high, and else if it is not less than 10 means it is greater than 10, then I am going to set the pin number 3 to low. Then whatever distance we have get, we need to print it. So I'm going to print it on the serial monitor dis and serial.println. It is printed in centimeter, and for every distance measurement we need to wait for some time. So I set a delay of 10 here. So that's it. That's our program logic. Inside the loop function, we have first set the trig pin, means the trigger pin, to means the pin number 9 on Arduino Uno board to high, and then wait for 1000 microseconds and then set it to low. Then we read the data from the echo pin and store it in a variable duration dur, and then we calculated the distance in the distance variable and store it in a distance variable. And if the distance calculated is less than 10, means that the value of the dis variable is less than 10, then I am going to turn on the LED, else I am going to turn off the LED. So if the distance from the ultrasonic sensor of any object is less than 10 centimeter, then I am going to turn on the LED, else I am going to turn off the LED. So that's it. That's our logic. So now let's save it. I'm going to save it on the desktop with the name ultrasonic, and here I save it successfully. Now I need to compile it to check whether the code written by me is okay or not. So it has compiled successfully. Now let me upload this code, and the code has been successfully uploaded. That's it. Thank you. So now you can see that. So now you can see there is a lot of due to fluctuations due to this wire. Let me show it clearly. Now if the distance goes less than 5 centimeter, the LED will turn on, and if I remove my hand from the distance, you can see the LED goes off. So it's the how ultrasonic sensor works. You can see, yeah, is it visible totally? Yeah, it is. You can see it clearly. Let me show you again. This is how this works. Hello friends. In today's presentation, we are going to talk about LCD, which stands for Liquid Crystal Display. What is LCD? LCD is a stable phase of matter
characterized by anisotropic properties without the existence of a 3D crystal lattice. LCD panel is based on light valve for each pixel that turns the light on. A backlight and display enhancement films create the illumination. These are some images of an LCD screen and LCD board. Now, this is the LCD technology. This LCD technology is about how illumination and radiance takes place on an LCD screen. Now, let's talk about history of LCD. In 1888, Austrian botanist Friedrich Reinetz discovers LCD, which is liquid crystals. And then in 1897, German scientist Carl Braun invents the cathode ray tube, which are used, or you should say were used, in the box TVs we used to have at our homes. And then over the years the technology developed, and finally in the year 2005 Samsung developed world's largest full HD TV TFT LCD screen, which is about 82 inches. Let's move forward. So, what are the advantages of LCD? First of all, it is physical size, which is very compact and lightweight and can be mounted on a wall or panel. Then the power consumption and radiation emission, which can reduce electric bills by 40 to 85%. Viewing an LCD screen causes less eye strain and does not flicker or glare. Color of an LCD screen is capable of displaying unlimited colors. And if we talk about resolutions, then LCD allows us multiple video resolutions. Now, let's move forward. There are a few disadvantages of LCD too, like the resolution displays native resolutions, which is not actually something good for our eyesight. The viewing angles are smaller and this allows to view it more directly from the front. The price is also high, but if we consider the long-term cost, then it can save energy. Now, for installation, you need a plug interface to connect to the computer, and some even require a special digital plug interface in order to work. Now, let's talk about digital images in pixels. A digital image which is displayed on an LCD screen is a binary representation of a 2D pictorial data. And pixel is the basic items of a raster image and include intensity or color value. You can define raster image over a 2D grid of picture elements. Now, if we talk about the application of an LCD, then liquid crystal can be used in thermometers, for optical imaging, for TV screens, and can also be found in visualizing of a radio frequency waves in the waveguide. This image depicts different parts of LCD screen: liquid crystal, electrodes, color filter, display surface, polarizing filter, light source. Now, the uses of LCD. As LCD is designed to project on-screen information of a microcomputer onto a larger screen with the aid of a standard overhead projector, you can find it in TV monitor or even in your computer screens. Nowadays, LCD screens are dominating the TV and computer market, and you can find them everywhere. Let's move forward. Thank you. Today I will show you
how to print text this on this I2C LCD display. So first need several component. You can see that on table. I'm using here the Arduino Uno board to connect our I2C display to this board. The second component I am using here, it is an I2C display. This I2C LCD display is the 4-pin display. It is using the I2C interface here. It means it only have the 4 pins, that is, the pins are the BCC pin and ground pin, SCL pin and the SDA pin. This HCL and SDA pins are used here. The HCL pin is the serial clock pin that is used to generate the clocks. This is generated by the master device, and after that this SDA pin carries the data. This is the serial data line. So we need to use only these 4 pins. And here you can see the knob. This knob is used to control the brightness of this I2C display. So I will be using this to print text. Next we have this these 4 connecting wires. These wires are male to female wires. You can see there, this is the male pin and this is the male pin. You can see that, and here on another side you can see the female connecting lead. So this is the male to female wires. I will be using it. So this was the component required. So let's connect this I2C display to Arduino board. For this I am using these connecting wires to connect this. First you need to connect the BCC pin of the I2C display to the 5-volt pin of the Arduino board. So you can simply connect it. Now I will connect the ground pin. You can see here the ground one. This is the ground pin. I will connect this ground pin to the ground pin of the Arduino board. Let me connect this. Now I will be connecting the pin number 4, that is your SDA pin. This is the SDA pin of the I2C display. This pin will be go to pin number A5 of the Arduino board. This will go to pin number 5, A5, that is the analog input. And now the HCL pin, that is serial clock pin, will go to the pin number A4 of the Arduino board. So this way the setup is completed. So now let's connect this Arduino board to our laptop using the USB cable. You are already familiar with it. So just connect the USB. Let me connect this. And this pin will go to the USB port of your laptop. And here's the output. You can see the Hello Edutainer print on the LCD I2C LCD display. Okay, now I will connect this USB port, this pin to the USB port. So let me explain the code now.
First, two lines are there to import the necessary library. Here, the wire library and liquid crystal I2C library are used. So, in the next line, first you need to set the pins on the I2C chip that is used for the LCD connection. uh, as you know that the normal LCD has 16 pins, but an I2C LCD uses the I2C interface, and it has got only 4 pins. So first we need to set the pins on the I2C chip. For this, you need the hex address of that particular IC. So there are there are many versions of this I2C LCD, and every version has the different address. The LCD I'm using, for that I2C LCD, the hex address is 0x27. So it's the basically the address, followed by the enable pin, read write pin, uh, RS pin, D4, D5, D6 pins. These are the D4, D5, D6 pins. So it will basically to set the pins on the I2C chip. Inside the void setup function, the lcd.begin 16,2, it will set the cursor as the LCD has the 16 columns and 2 rows, and after that, to print on LCD, here the lcd.print is used to print the welcome to edutainer on the display. Okay, inside the while loop function, the for loop is used, and you can see the counter is initialized with the 0, and the condition is 21. Here the 21 is used because if you count the letters in the sentence welcome to edutainer, you'll find there are 21 letters. So we need this loop till the 21 position, and using the scroll display left function, this function will scroll every letter to the left. So it will scroll the every 21 letter one by one. It will shift the letters to the left on the I2C LCD display. And after that, in the next line, now we need to save the each letter to the right position. For that purpose, there was 21 letters, and also you know that in an I2C LCD there are 16 columns, so 21 plus 16 makes the 37. So we need to move that letters till 37th position, because 16 for the column and 21 for the sentence that is welcome to edutainer. So it will make the 37, and using the scroll display right function, this will shift each letter to the right. And then the for loop, this loop is for to after scrolling left and right, this function will keep this for loop is for keeping the text in the middle. So this was the simple code. Let me upload this to the Arduino board. Okay, it's uploading. Okay, it's done. You will observe that this output. So now you can see the scrolling test on the display of I2C LCD. So this text is scrolling from left to right, and then it will scroll from right to left. This will go to the left, and after that this text will scroll to the right.
So in this video, we are going to learn how to use this DST sensor and to print the value sensed by this DST sensor to our LCD. So let's begin with the component introduction. That is so basic. We are using this Arduino Uno board. You are using from the previous videos, so you are already familiar with it. And a breadboard. You can see this is the breadboard. And the main component, let's come to the point. And the main component of this project is this DST sensor. Yeah, you used in previous videos, but now we are going to interface it with I2C LCD. So you can see clearly there are three pins are there. That is a plus BCC, ground, and the signal one. That's middle one is working as the signal pin of this DHT sensor. It senses the temperature as well as humidity. This is very sensitive. And the other one is our LCD. This is the I2C LCD. When I say I2C, it means it is using the I2C interface. Like you know, in an LCD there are 16 pins, but you can see there are only 4 pins out. This is due to this I2C interface, and the 4 pins are the ground, the plus VCC, and serial data pin, and the last one, that is serial clock pin. So serial data pin carries the data, and serial clock pin used to generate the clock to synchronize the systems. So that's how we will be printing the text and temperature and humidity on this LCD screen. So that's the basic requirement, and we have some few connection to make the connections out. Some connecting wires is required, and a USB cable to make this connection and to connect your Arduino with your laptop. Thank you guys. Now let's make the connections on the board. So first we will interface this DHT sensor with the Arduino Uno. So just place it like this, and now I'm going to make connections between the DHT sensor and the Arduino pins. So let's connect it. So just a basic connection, you can place it here. So just connect the ground pin of the DST sensor to the ground of the Arduino pin, and this is the ground pin of the Arduino, and this is the 5-volt pin. So I'm going to connect it to the V in, as the DST sensor uses the V in the input voltage, so it's better to connect it. Let me do this. Your connection should be tight, otherwise it will not work anymore. And as a digital input or as a signal, to give the signal, I am using the digital pin number 8 of the Arduino. And now our DST is connected to the Arduino, as you can see that. And now we will interface our LCD to the Arduino. Let's make this connections out. So just connect your 4 pins there, like first these are, I'm using the female to male wire, you can see it clearly. So first let me connect the all 4 wires to its pin, the VCC, ground, and the serial data pin, and the last one, serial clock pin. Now I'm going to connect these pins to the Arduino board. Now connect the ground pin of the Arduino to the ground, and now I'm going to connect this PCC pin to plus 5 volt. You can see that this is the 5 volt, and now I'm going to connect the serial data pin to the analog pin
of the Arduino, that is A4. This is connected to A4, and last but not the least, the serial clock pin is going to be connected to pin number A5, that is the analog input of from the Arduino. So it's just a basic connection, you can make it easily. So now our connection is completed. We will go to the output part and we'll be doing some coding. So finally I'm going to connect this Arduino to the laptop, and yes, now you can see that this is going to be connected to one end to your laptop. So guys, now I'm going to explain you the coding part. So I have written the code over here. So let's start with these first 4 lines. So these lines are there to include the necessary libraries in the Arduino IDE. So cause we are using here the DST sensor and liquid crystal display and the I2C interface, so we need to use this library, and we also need this while library. So these first 4 lines are there to import the necessary library for this project. After that, I have defined the DST pin number 8 cause we have connected the DST sensor with the pin number 8, and I have also defined the DST type, that is DST22. In this line I have given the parameters DST pin and DST type inside the braces. Okay, in this line, that is your liquid crystal underscore I2C LCD, and inside the bracket, this is the hex code of your I2C LCD. You need this code, and this particular line initializes the library with the number of interface pins. These are the pins 2, pin number 2, pin number 1, 0, 4, 5, 6. Basically we can use the LCD two ways, like if you we can use this simple LCD with the lots of connection with 16 pin configuration, but here we are using the liquid crystal with I2C interface, so we need to map the pins. So first, so this line basically initializes the library with the number of interface pins. After that, in the default setup functions, here this serial.begin will start the communication to the serial monitor. After that, serial.println, I have printed a line. This line will print the DST test on serial monitor, and now DST.begin will start sensing. Okay, so first you need to set up the LCD's number and a number of columns and rows. So this LCD.begin line will do it for you. That is 16, 2, that is number of columns, and there are 2 rows. So this particular line will set the number of columns and rows. After that, the LCD clear. Then this line will print the hello edutainer on LCD screen, and the next, inside the loop, I have declared a variable h and t of float type, where I will be storing the values of the sensor to reach the humidity and temperature, and these value will be stored in the float variable h, and the temperature will be stored in the float variable t. And after that, I have used this if statement to check if the value that read by this line, that is stored in h and the value stored in t is not a number.
So if there will be if that will not be a number, so it will print failed to read from DHT. Otherwise it will print the humidity, and it will print the humidity. And again in this line I have here in this line, this particular line will print the value of H, cause we stored the value of humidity in H. And next line will print the temperature, and this line will print the value of T, cause we have stored the value of temperature in T variable. So that's how you will see the output. So, and after that this particular line will give a delay of a half second. So that that was the code. I have explained it to you guys, so hope you got it clearly. And now you can see the output, that temperature and humidity is 50%, and you can see the temperature is 24.8 degrees centigrade. So this is how, and this data will be refreshed, and meanwhile whenever the data will be refreshed by the serial monitor, it will appear on the I2C LCD as well, so you can see that clearly. So thank you, and we have learned it to how to display this data to the I2C LCD. Hello friends, today we are going to have a presentation on thin film transistors or TFT. What is TFT? TFT is known as active matrix display technology, which does not have a transistor at each pixel. A TFT or active matrix display is more responsive to change. Any display screen made with TFT technology is a liquid crystal display or LCD. You must have seen LCD screens in laptops or in your TV screens. This is how a TFT looks. Active matrix display. It is a technology which is used in LCD displays like laptop screens or flat screen monitors. The brightness of each pixel in an active matrix display is controlled by modifying the electrical charge of the corresponding capacitors. This is the image with all the details. Here is the polarizer, TFT glass, color filter glass, polarizer, and this is the liquid crystal, and yes, the backlight. Let's move forward. This is the descriptive diagram of TFT. Here are USB DFU connector, Arduino, audio amplifier, speaker out, line in, plastic bezel, Arduino configuration jumpers, level shifters, micro SD card socket, camera interface, and more. Now this is how a TFT works with Arduino. This is Arduino Uno and this is TFT, and these are the connecting wires. Now for setting up a TFT connection with Arduino, these are the connections that are to be made. You can see that pin 5 is connected to 16, which is DB7 on the LCD screen, and so is the others. These are the outputs. Now the result display is something like this, which is obviously amazing. Advantage of having a TFT: they are known for their very clear and vibrant colors and uses about half the amount of power as compared to the normal monitors.
and yes, much smaller and thus easier to handle. Disadvantages are the viewing angles are usually not that great and lead to distorted images. Usually they have static resolution and thus the resolution of the monitor can't be changed. While the colors are beautiful, they aren't always very accurate, especially when someone is trying to, replicate the strong blacks or whites. Thank you. In this video, I'll show you how to connect this Arduino TFT screen to the Arduino Uno board. So let's get started. Here I am using the component as this Arduino Uno board. You are already familiar it with. So next, the main important part of this simple project is this TFT screen. You can see this is the Arduino screen. You can use it to connect it with the Arduino, and there and on the back side you can see there is a Arduino. To connect this Arduino there is a SD card slot, and also there are lots of pins which you can use to fit this LCD TFT onto the Arduino sockets. So let's get started. And also you can draw anything. You can use it as the touch screen with Arduino. You can draw any kind of text or any kind of shape in it by using the touch screen. So let's connect this to the Arduino. Now place these pins carefully onto the Arduino socket. So we need to fit it very carefully. So let's connect this. This is the simple connection. You can use it. Sorry, I'm using it the wrong way. So no issues with that. Let me connect this. So you can connect it like this, and it is easily fit. Don't push it so hard, it can break the pins. So our connection is done. It is as simple as that, as you can see. So let's connect this TFT to our laptop using this USB cable. So let's connect it and observe the output. You will see the effect after connecting. Let me connect this. So the motherboard will be in the USB port of the laptop. So as you can see, I have already written the code here. So let me explain the code to you. In the first 3 lines, I have included 3 libraries. First, the Adafruit gfx.h library, then mcufriend_kb.h library, and then the touchscreen library. You need to download these libraries. Then I have declared 8 color codes here. So I have declared the variables named black, blue, red, green, cyan, magenta, and yellow and white with their respective color codes here using the hash define function. That's it. Then I have created the object of the mcufriend_kb class with the name TFT. Then inside the setup function, I have first set the baud rate to 9600 using the serial.begin function. Then I have created a variable id with the data type unsigned int and read the id of the TFT object, means read the id of the TFT. Then I have printed it on the serial monitor as serial.print TFT space id and 0
X, and I have printed the ID in the hex format here using the hex format like this. Then I have used the TFT object and set it to begin on the same ID and set the rotation to 0. Rotation here, rotation 0 means the TFT is set to portrait mode. So now let's look at the loop function. Inside the loop function, I have set the TFT object with the fill screen function to red, means the TFT will be red first, so and then it will wait for 1000 milliseconds. Then again I set the TFT to blue, then again green, then yellow, then magenta, and then cyan by using the fill screen function on the TFT object and wait again and again for 1000 milliseconds. So that's it. So according to our program logic, the TFT will be fill with red color first, then wait, then fill with blue color, then wait, then fill with green color, then wait, then again fill with yellow, wait, print magenta and cyan, and then wait. And this process will run repeatedly because the while loop will run repeatedly. That's it. So our program logic is clear. So now let me first compile this code. So it has successfully compiled. Now let me upload this code. So the code has been successfully uploaded. And you can see the changing color, green and violet, magenta and all things, red, blue. You can observe it. So this is the changing color effect. So this is done. How can we connect this TFT? And we have learned it. Hello friends, today we are going to talk about OLED. What is OLED? OLED is a light emitting diode which contains organic layers. These organic layers are responsible for light emission. OLED are now used in various devices like smartwatches, smartphones, etc. Here are a few examples of OLED devices. Basic principle of OLED. It uses the process of electroluminescence. In this process, material emits light in response to electric field applied across it. Current flows from cathode to anode through the organic layers. Electrons flow to emissive layer from the cathode and remove from conductive layer, leaving holes. OLED structure layer includes cathode, emissive layer, conductive layer, anode and substrate. Cathode injects electrons into emissive layer. Emissive layer is made up of polyfluorine that transport electrons from the cathode. Conductive layer is made up of polyaniline that transport holes from the anode. Anode is kept transparent, which is usually made up of indium tin oxide or ITO. Substrate supports the OLED. Types of OLED: passive matrix, active matrix, transparent, top emitting, white OLED, foldable OLED. Benefits of OLED: less power consumption, safer for environment, flexible display and lower cost in future. What are the major drawbacks of OLED? Easily damageable, complex fabrication methods, and the lifespan. This is the diagram that depicts the connection between OLED and Arduino. You can see on what all pins the connections have been made. This is ground, this is 5 volts, this is SCL and SDA. Thank you.
So in the series of video lecture, now I'm going to show you how to use an OLED with Arduino. So as the usual component you are already familiar with, here I am using a breadboard, you know it already, and Arduino Uno board. We have used it many times, so you know that. The main component I'm going to use it an OLED. This is OLED basically stands for organic light emitting diode, and it is very flexible than your LCD display. It is better than that. It can be made flexible and you can use it to make some kind of smart watch to track your daily activity. As you can see at the back side of this OLED there are 4 pins, and these pins are similar to that I2C display. There is one BCC pin and the ground pin, SCL and SDA pin. SCL is the serial clock pin and SDA is the serial data pin. So you can see it, and it is very simple to use, so don't bother about it. Now these are the basic component and similar the connecting wires I'm using to make this connection, and a USB cable usually to connect this Arduino to your laptop. Okay, now I'll connect this OLED to Arduino. For this, just place this LED on the uh, on this breadboard. Just place. Let me place this, and be careful. You should not damage the pin, otherwise it will not be working. So first, I need to connect this Arduino to this organic LED. I need to use first we will connect this serial clock pin, that is the HCL pin of the OLED, to the last pin of the Arduino. This is the HCL pin of the Arduino. So I'll connect it to this HCL pin, and after that connect the serial data pin to the serial data pin of the Arduino, that is pin number 18 of the Arduino. It's just a simple connection. And now connect the VCC pin of the OLED to the 5-volt pin of the Arduino, and finally connect the ground to the ground pin of an Arduino. So this is the complete setup, and you can see the setup is completed. So let's connect this to the end of your Arduino, and the other one connect it to the USB port of the laptop. So as you can see, I have already written the code here. So let me explain each line to you. So in the first 4 lines, I have included 4 libraries. First the SPI library, then the wire library, then Adafruit gfx.h, then Adafruit ssd1306.h. I am using the Adafruit ssd1306.h library to use the Adafruit ssd1306 class and have created an object of this class with the name display. Then by using the constructor Adafruit ssd1306, I have passed 3 parameters here and have initialized the display object. Then by using the hash defined keyword, I have initialized the numflex variable with 10 value and the logo height and width variable to 16, respectively. Now the logo underscore bmp
is the bitmap of the bitmap which of the image which I am going to use in this OLED project. Then inside the setup function, I am going to first set the baud rate to 9600. Then I print OLED test, and by using display.begin I am setting it to SSD 1306 as switch CAP VCC, and have passed the address 0x3C. Then I set OLED, I have printed OLED started. Then wait for 1000 milliseconds and clear the display, and then using the display object I call the display function so to display anything on the OLED. Then I have created a custom function named clear all. So let me tell you to clear all. In clear all function, using the display object, I set the text size to 1, set the text color to white, and set the cursor to 00 of the OLED. Then by using the println function, I first press A, press B, press C and press D consecutively and set the cursor to 00 and then display it. So when you will connect your USB and upload the code, you will first time see these 4 options there: press A, press B, press C and press D. Now let me explain these to you. Then inside the loop function, I am going to listen for the data. So if the data received by using the serial read function, I am receiving it in the data variable, and after that I clear the display, then I switch this data. So if the data received is either A, B, C or D or anything else, so if the data received is A, B, C, D, then I am going to do some work. So for A, I am going to draw some lines. For B, say I am going to draw some rectangles. For C, say I print welcome, and D, I draw some bitmaps, and anything else, then the same options will be printed there. So let me see every function. So let's start from the A, text draw line. So this draw line function basically first clears the display and then draw a line from the 0 to the width of the display with an increment of 4, and then draw the height with the same 0 to the height of the OLED with an increment of 4 and a delay of 1 microsecond. Then it again clears the display and do the same thing again and again in reverse order and other things. So that's our code logic here for drawing the line. Now let me take you to the second function, draw rectangle. So in the second function, draw rectangle, I am going to draw a rectangle from the 0 starting in a slice from 0 to the height of the OLED display and with an increment of 2. So it will draw the rectangle. It has a value from 0 and it will draw multiple rectangles there. That's it. Now the third one, the welcome message. So inside the welcome, we just have printed welcome to Edutainer. That's it. Now the bitmap. In this bitmap, we have whatever the bitmap given here in the long logo underscore BMP variable, we have used it here with the logo width and height like this. So that's it. We are displaying the bitmap here. And if any other key is pressed or any other data is received, then we are going to set the default mode, means the press A, press B and press C and D option will be there. That's it. That's our program logic. So I have already checked it. So first let me compile it and show to you that there is no error in this code. So you compile here. So as you can see, it has successfully compiled. So now let me upload this code. So it has been successfully uploaded.
And now observe the output screen. Here are four options. Here is the four options A, B, C and D. And now you can observe the output on if you will give the input A on the serial monitor, you will observe the display will be filled by the random patterns of this board. So let me just open the serial monitor, and now I will give the option A, and now you can see the multiple the filling display of this organic LED. And if I give the option B, so you can see the rectangle for a second. So, and in the option C you can observe welcome to edutainer. You can increase the delay to observe the output. Here I have given only 2 seconds. And option D, you will see a bitmap image for just for a second. So this is how this works. Hi friends, today we are going to have a presentation on servo motor. What is servo motor? Servo is referred to a mechanism based on feedback control, and a servo motor is a rotary actuator or linear actuator that allows for precise control of angular or linear position, velocity and acceleration. They are not just a specific class of motor. This is the image of a servo motor. These are the various types of servo motor. How does a servo motor works? In this presentation, the entire procedure of the working of a servo motor is mentioned. You can read it out. Here are a few diagrams related to the angular rotation and the rotation provided by a servo motor. Positional rotational servo. This is the most common type of servo motor. The output shaft rotates in about half of a circle or 180 degrees. Continuous rotation servo. It can turn in either direction indefinitely. The control signal, rather than setting the static position of the servo, is interpreted as the direction and the speed of rotation. Linear servo. This is also like the positional rotation servo but with additional gears, usually a rack and pinion mechanism. Now here are a few advantages of servo motor. It allows high output power relative to motor size and power. Encoder determines accuracy and resolution. Highly efficient. There is no out of step condition, as heavy load placed on the motor, the driver will increase the current to the motor. High speed operation is also possible. So in today's video, I will show you how a servo motor works. For this project, this is a very simple project. I have this Arduino Uno board. You are using it continuously, so you are already familiar with it. Let's move the main part. This is a servo motor. I am using it to show you how it works. So we will be connecting it to the Arduino board. You can see there is a blade and the three output wires here. The gray one, there are three wires. This wire is a ground and other wire is a 5-volt VCC, and the orange wire is the signal wire of the servo motor. We will be giving the digital input to this signal one. So
This is the basically servo motor is a rotary motion. It works on the rotary principle. It rotates and controls the arms movement. It has a control part inside it. So I will show you how it works. This is a very simple project, and the usual component I'm using here, the three jumper wires to make the connections, and after that I have this USB cable to connect this Arduino Uno board to your laptop. So this is the components required. So now I will connect the servo motor to the Uno board. As you can see, this we need only three wires to connect the servo motor. As the first one, the middle one is a 5 volt of the servo motor needs BCC. I will connect it to the 5 volt pin of the Arduino, and I will connect this gray pin of the servo motor as a ground. Sorry, 1, 2, 3, 4, and this one will be connected to the ground of the Arduino, and the orange pin needs the signal for which I am using the pin number 3, the digital pin number 3 of the Arduino board. So it's a very simple connections, and as you can see I'm done with the connections. So now it's basically the move to the coding part. So let's move to the coding part. Our connection is done. Okay, so after completing setup, let's move and connect to see how the servo motor works. So let's see, let me connect this. As simple, this will goes to your USB port of the laptop. So let's start the coding part. First I am going to include the servo library using the hash include servo.h. So once servo library is included, I can use the servo class. So I use the servo class and create an object servo1. Then I declare a variable of integer data type int position and initialize it with value 0. Then inside the setup function, I set the servo1 to pin number 3 of Arduino Uno board using the servo1.attach command. Then I set the servo to 180, means I am writing it to 180 degree. Then inside the loop function, I use the for loop and initialize it with value 0, then 180. So inside for loop, I am going to set the value of servo motor with the position variable. Here in this for loop, I have first initialize the position variable with 0 value, then there is a condition that it will run from 0 to 180 and with an increment of 1. So for every step the for loop executes, the servo motor will increase its angle from 1. Then I wait for 10 milliseconds for every iteration. So with every iteration of for loop, the servo motor will move its angle from 1 and with a delay of 10 microseconds. Then again I run the same for loop in reverse order. Here I initialize it with 180 and with a condition of value greater than or equal to 1 and with a decrement of -1. Then I write it and wait for 10 milliseconds.
So that's it. In this for loop, we are first using the first for loop to run the servo motor from the 0th angle to 180 degree with an increment of 1 and with a delay of 10 microsecond. Whereas in the second part we are setting it from 180 degree to 1 with a decrement of -1 and a delay of 10 microseconds. So that's it. That's our program logic. So now let's save it. So I'm going to save it on the desktop, servo motor, and I save it. So it has been saved successfully. Now I compile this and it's compiling. It's taking some time. So it has successfully compiled. Now let me upload this, and as you can see, it has uploaded successfully. Now you can see the movement and the rotatory motion of the servo motor. As you can see, this will go to the 180 position and now return back to the 0, and this will movement is done by the servo motor. You can observe it. It's clearly visible, as you can see it now. The 0, 180, 0 and 180 again. So this is how it works. अब रख दीजिए. Hello friends, today we are going to have a presentation about DC motor, which is a device that converts electrical energy into mechanical energy. So let's start. First of all, what is a DC motor? A DC motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy, as I just said, and it is used in some special devices like in steel mills, mines, electrical tractions, and various others. This is the image of a DC motor. Let's move forward. Now let's check out working of a DC motor. This diagram depicts very effectively how a DC motor works in real. The principle of DC motor is that whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a mechanical force. This works on Fleming's left-hand rule, which says F equals to BIL, where B is magnetic flux, I is current, L is length, and F is force. Let's move forward. This is just a simple diagram that depicts thorough working of a DC motor. When electric current passes through a coil in a magnetic field, the magnetic force produces torque, which turns the DC motor. Now, let's see what are the main types of DC motors. First is permanent magnet DC motor, which uses a permanent magnet to create field flux. These are very great for starting torque and has good speed regulation. The second is series DC motor. This one is wound with a few turns of a large wire carrying the full armature current. Let's move forward. The other types are shunt DC motor, which is connected in parallel with the armature windings. These motors offer great speed regulation. The other one is compound DC motor. Now these, like shunt DC motors, have a separately excited shunt field and also have good starting torque, but may experience control problems in variable speed drive applications. Now this image is a DC motor description where you can see all its parts like rotor, frame, eye bolt, wound stator, insulation,
rotor laminations, gasket to frame, protection to inner, conduit box, and many more. Now, this is how a DC motor would work with Arduino. Let's check out a few disadvantages of DC motors. DC motors have high initial cost and maintenance cost due to the presence of commutator. Also, they cannot operate in explosive and hazard conditions. These are a few applications of DC motors: paper mills, cranes, elevators, electric trains, and much more. Thank you. In this video, we will learn how this DC motor works. So first, the component we need is the simple Arduino Uno board and a DC motor, the most important component. As a component, this DC motor works. How we will learn in this video, and you can see there are two wires, the red one and the black one. So it's just to give the supply to the motor, and you can see the pin, it will rotate in the clockwise and anti-clockwise as required, as you want. It depends on codes. So this basically a DC motor. It converts the electrical energy into the mechanical energy. We will be using it during our project. And this is the wheel, just a simple wheel to show you how it will be rotated by DC motor. So just you can observe it. And after that, as an important component, this is a motor shield. It is easily fittable to the Arduino sockets. Why we are using, the first thing comes in your mind. This DC motor shield, I am using it to control the movement of the motors. You can connect multiple motors. It basically used to drive the circuits like inductor, solenoid, DC motors, and different kind of motor you can connect it. In this motor shield you can connect at least 4 motors. You can see there are the port, there are 4 port, M1, M2, and you can see this M3 and M4. So these are acting as an input of the motors. You can see it. So it's a motor shield we are using, and we also need this screwdriver. It's just a small screwdriver, not of the big size. You can use it to plug this motor into the circuit. So it's just a component introduction. Let's move to the connections. So now we'll make the connections. So just this is the motor shield. I'm going to put it on the Arduino circuit. So just make sure that you are using it in current directions. Like you have to just like this is the port and this is the pin. So I'm connecting it just like this. In this fashion you can connect it's easily fittable. You can fit it directly. Make sure that it should not damage the pins. Let me connect it. Okay, so this is simply you can connect it. Now we'll connect this DC motor pins to this circuit. So let me just connect it. Now you'll need a screwdriver to just
put it on the circuits. Now you can use it like just let me connect this, and this time you're gonna need this screwdriver. So just make sure you're connecting it, and now the black pin goes to the negative. This is the M1 port. Just connect it. And now the final, I am attaching this wheel to the DC motor just to connect this. And to connect it, make sure you have the right directions. Okay, somehow hard. So the connection part is done. As you can see there, our connection is completed. So basically you're gonna do this by using this screwdriver. Make sure you should not damage the pins. So it's the basically connection. Let's move to the coding part. Now the most interesting part, you're gonna see the output, how this DC motor works. Let me connect this. Okay, wait for some time. Let me do this. This is the part you'll see when I will connect it. You can see, make sure you take it on your hand, otherwise the circuit will it will. So now let's start the coding part. So first I will include AF motor library for using motors. So AF motor.h. Now I will create the object of class AF DC motor one. The object name is motor1 and I am setting it to 1. By this line we mean that we are creating the object of the class AF DC motor with the name motor1, and the motor is connected in the first pin or the port of the motor shield. Then inside the setup function we are going to use this motor1 object and set the speed of the motor to 255, that is maximum. Then inside the loop function we are going to use this motor1 object and use the function run and set it to forward. So by using this line we are setting the object motor1 of AF DC motor class to forward using the run function. Then we wait for 100 milliseconds inside the loop function. So that's it. According to our program logic, we have first set the motor1 object to a speed of 255, that is maximum, and then inside the loop function we have continuously moving it forward and with a delay of 100 milliseconds. So the motor will run forward every time and wait for 100 milliseconds, then again move forward, and in this way the motor will run continuously. So that's it. So now let's save this code. So I'm going to save it in with the name motor shield in the desktop, and I save it here. So it is successfully saved. Now I compile this code. So it's taking some time. Let's wait. So the code has successfully compiled, there is no error. Now let's upload the code. And the code has been successfully uploaded.
You can see the rotating wheel. You can rotate in reverse manner also. It all depends on the coding in which direction you want to move this motor. So you just basically you need to modify your codes, and it's just a simple code. You're gonna need it, not so tricks to rotate this. So this is how a DC motor works. So you can find it, so you can see this. That's why I use this wheel. Okay, so on the series of this video lecture, now I'm going to tell you how to use the SC05 Bluetooth module to connect this to Arduino. Now let's move to the component requirement. This is the SC05 Bluetooth module. As you can see, there are 6 pin here. Here you can see the 6 pin configuration in this Bluetooth SC05 module. You can use it for wireless communication, you can communicate by using it wirelessly. And as you can see, there are 6 pin: state, receiver pin, transmitter pin, ground pin, BCC, and the last one is the enable pin of this Bluetooth module. So this module I'm going to use it uses the less power, as it is written 3.6 to 6 volt range. So this is the complete structure. And okay, now I have one LED. You are already familiar with it, and the 220 ohm resistance I'm using it, and the Arduino Uno board. You are already familiar with it. So just and user breadboard and the connecting wires. So these are the components required to make the setup. Now move to the connection part, and I'm going to connect it. So just place this Bluetooth module over here. As you can see that this is a pin direction, and I'm going to use it. Just place it here, right like this, and now connect these pins to the Arduino board. Now I'm going to connect the VCC pin of this Bluetooth module. This is the VCC pin. I'm going to connect it to the 5 volt of the Arduino board. You can see this. So this is just like this. And now connect the ground pin to the ground pin of the Arduino. As you can see, the ground pin of the Arduino, it is going to be connected, as I have connected it. And now one pin, and let's connect this transmitter and receiver as well. So just it is a transmitter, make sure that you have to use it. This is the transmitter, you can put it here. And another one, we will not be connecting it, because we will be using it for after uploading the codes. So these pin will not be used until and unless the code is going to be uploaded. And after that, let's connect this LED. So this is the positive pin of the LED, this is the positive pin of the LED, and this is the negative pin of the LED. So ensure before place it on the breadboard. So just now place it on the breadboard and just connect this
through a resistance of 220 ohm. Here it is the resistance, just connect it to the resistance of 220 ohm, and the positive one, let me connect it now. Just connect the resistance, and now, and I'm using the pin number 3, the digital pin number 3 of the Arduino board to connect the positive pin of this LED and the negative pin to the ground. So for now you can use the negative pin for the ground, just let it take me to longer. So this is going to be the ground of your LED. So this is our complete setup, you know that. So our setup part has been completed. Okay, let's connect this Arduino board to your laptop using this USB cable that I have. Let me connect this, and after connecting you will see the results. And okay, so now it's connected. So let's start the coding part. So first, I'm going to declare an integer variable pin and initialize it with value 3. Then inside the setup function, I am going to first use serial begin function to set the baud rate to 9600. Then by using pin mode function, I am going to set the pin variable to output. By using this line, I am telling the compiler to set the pin number 3 on Arduino Uno board to output. Then inside the loop function, I am going to continuously listen for any Bluetooth connection. For that, I am going to use if serial.available command greater than 0, means the data received or any connection received from the Bluetooth is greater than 0, then I am going to read the data from the Bluetooth. For that, I am going to declare a variable data of character data type and listen for the data using the read function. So I am reading the data from the Bluetooth. Now I need to check what is the data and do some action based on that data. For that, I am writing a logic for that. Switch data case A means the character received from the Bluetooth is small a. Then for that, I am going to use set the pin variable to high. For pin high means I am going to turn the LED on. Digital write pin high case B break digital write pin low. So if the character received from the Bluetooth is small a, then I am going to turn on the LED, and if it is received from the Bluetooth is small b, then I am going to turn off the LED, and using the delay function for waiting for 10 milliseconds. So that's it. So this is our program logic. Here in the loop function, first we are listening for any Bluetooth connection, and if there is a connection, then we are going to read the data using serial.read function and store it in a character data type variable data. Then we need to perform some function depending on the data, so we switch it, and if the data received from the Bluetooth is small a, then we are going to turn on the LED, and if the data received from the Bluetooth is small b, then we are going to turn off the LED. And this is our program logic. That's it. So now let's save it. I'm going to save it here, Bluetooth, and I save it. So it is saved. Now let's compile this. So it has successfully compiled. So now let's upload our code. So as you can see, it has successfully uploaded. So we will upload the codes, and you can see I will upload the code on the board through the Arduino, and after that, after uploading the codes, now the
Now I will connect these two wires to the transmitter and receiver of the Arduino. So let me just connect this. This is the transmitter pin which will goes to the receiver pin of the Arduino, and and this is the receiver socket of Bluetooth module which will go to the transmitter socket, that is pin number 1 of the Arduino. So now it is connected completely, but now I will show you this LED will glow when I will send the data. So let me show you. This is you can use your Android phone. Now I have this is the Bluetooth terminal HC05 software. As you can see, there are no device has been appeared, so just press scan, and now the scan device is scanning, and uh, we will try to find SC05. You can see this is SC05. Just connect it. This will ask for the password. So by default password for this module is 1234, and just click OK. It will be connected. Now it is connected, and now you will see this LED turn on when I will send this data. So just press, and now I'll send the command A, send as sky. You can see this LED is glowing, and now you can send B. If I send B, it will be turned off. Again A, test turn on. Now B, LED will turn off. So you can see that. You can see send V. So this is how it works. Works fine. Thank you. Hello everyone, welcome to the Arduino. In this lecture, I am going to teach you about actuators. So let's see what is actuators. Before this class, I will discuss about the sensors. So we will learn about the sensors. Now, the next building block of Internet of Things is actuator. So actuators is a device which takes electrical signals as input, and it converts these electrical signals in some output form, physical output. और इसकी और प्रेसाइज डेफिनेशन की बात करें तो सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, ऑप्टिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है। सिग्नल किसी प्रकार का सिग्नल हो सकता है। उस सिग्नल को एक्चुएटर क्या करता है, इनपुट के तौर पे लेता है और उसे फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, किसी लिविंग थिंग्स के रूम में प्रेजेंस होने का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस रूम में एंटर होता हूँ, तो मेरे रूम में एंटर होते ही इस रूम की लाइट्स जो हैं टर्न ऑन हो जाए, और मेरे रूम से बाहर जाते ही, इस रूम से बाहर जाते ही लाइट्स जो हैं ऑफ हो जाए। सो इसके लिए मुझे माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर और एक्चुएटर्स की जरूरत पड़ेगी। माइक्रो कंट्रोलर्स में प्रोग्रामिंग कर दूंगा कि रूम के अंदर प्रेजेंस होने पर लाइट टर्न ऑन हो जाए, रूम से बाहर जाने पर लाइट टर्न ऑफ हो जाए। लेकिन मेरे प्रेजेंस होने को सेंस करेगा सेंसर। मैं उसके लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज कर सकता हूँ, या उसके लिए PIR सेंसर का यूज कर सकता हूँ। इन सेंसर्स की हेल्प से मैं अपनी प्रेजेंस जो है डिटेक्ट कर सकता हूँ उस रूम। देन आफ्टर लाइट को टर्न ऑन या ऑफ करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्चुएटर की। एक्चुएटर क्या करता है, जो सेंसर से मिली इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब वो सेंसर से मिली इंफॉर्मेशन सिग्नल्स की फॉर्म में होती है, तो उन सिग्नल्स को क्या करता है, प्रोसेस करता है एज ए इनपुट के तौर पे, और फिर उसके लिए वो कोई पर्टिकुलर
फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच का यूज करते हुए लाइट को ऑन कर सकता है, लाइट को ऑफ कर सकता है। अगर मैं प्रेजेंस हूँ रूम के अंदर तो लाइट को ऑन कर देगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच के जरिए ऑटोमेटिकली, और अगर मैं रूम के अंदर प्रेजेंट नहीं हूँ तो लाइट को ऑफ कर देगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच के जरिए ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटरवेंशन। सो दिस इज द एक्चुएटर। तो एक्चुएटर की ये रियल डेफिनेशन है कि किसी भी सिग्नल्स को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में हो, मैकेनिकल की फॉर्म में हो या ऑप्टिकल की फॉर्म में हो, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करते हैं और इस सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है फिजिकल आउटपुट। और एक्चुएटर्स की कई सारी डेफिनेशन है। एक्चुएटर्स को जरूरत पड़ती है एक तो कंट्रोल सिग्नल की, ये सिग्नल एक तरीके से, तो कंट्रोल सिग्नल एंड अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं एक्चुएटर्स के लिए जो इसे चाहिए, एक तो कंट्रोल सिग्नल और दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट थिंग, एक्चुएटर एक ऐसी मैकेनिज्म है बाय विच अ कंट्रोल सिस्टम एक्ट्स अपॉन एन एनवायरनमेंट। इट इज अ मैकेनिज्म, हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच a control system acts upon an environment। किसी एनवायरमेंट पे कंट्रोल सिस्टम जो है एक्ट कर सकता है। So there are many definitions of actuators, but the simplest one is किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करना है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। और उससे जरूरत क्या होती है? कंट्रोल सिग्नल और सोर्स ऑफ एनर्जी की। कंट्रोल सिग्नल मिलते ही उसे क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ सोर्स एनर्जी किसी मैकेनिकल मोशन में या मैकेनिकल टॉर्क में उसे कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल मोशन का मतलब है कि जैसे उसे लीनियरली उसको मोशन कराना है तो लीनियरली मूवमेंट करा देगा, रोटेशनली मूवमेंट करा तो रोटेशनली मूवमेंट करा देगा, ऑसिलेटरी मूवमेंट कराना तो ऑसिलेटरी मूवमेंट करा देगा। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिजिकल आउटपुट्स है। तो फिजिकल आउटपुट्स जो है वो मेन जो है टारगेट होता है एक्चुएटर्स का। और एक्चुएटर्स का एग्जांपल अगर हम ले तो सबसे सिंपल एग्जांपल जो है एक्चुएटर्स का वो है रिले स्विच। आईओटी के कोर्स में रिले स्विच को एज अ एक्चुएटर के रूप में मोस्टली यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है, इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एसी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, लाइट को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिसमें कि ऑन एंड ऑफ की जरूरत पड़ती है उसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकली जो है उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं इस रिले स्विच के जरिए। सो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्चुएटर। अदर एग्जांपल might be solenoid valve। solenoid valve में क्या करते हैं, ये जनरली वाटर के कंट्रोल को जो है मेजर करता है, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप। किसी पाइप में वाटर का किस तरह से फ्लो हो रहा है उसको जनरली सोलेनॉइड वाल्व जो है एक ऐसा एक्चुएटर है जो कि कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट एक इनटेक में अगर बहुत सारा वाटर जा रहा है तो हम अगर कम अमाउंट में आउटपुट में लेना चाहते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सोलेनॉइड वाल्व का यूज करके उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो these are the examples of the actuators. So I think you got the point of what is actuators, and also I have given the two examples of actuators. Now let's see the types of actuator. You note down these points.
I think you note down. Okay, so I will erase them. Now let's see the types of actuators. Actuators can be classified in 5 types. The first one is hydraulic based actuator. Hydraulic means here we need some fluid to run the actuators. Second one is pneumatic based actuators. Pneumatic means here we need some kind of air or vacuum, pressure air. So this kind of things are required for pneumatic based of actuators. Third one is electrical based actuators. So electrical based actuators generally require electrical signals to run the actuators or to process to use the actuators definedly. Fourth one is thermal or magnetic based actuators. So thermal और magnetic based actuators में हम क्या करते हैं, either thermal energy का यूज करते हैं या फिर magnetic energy का यूज करते हैं. And the last one is mechanical based actuators. Mechanical based actuators में mechanical motion, mechanical और mechanical motions या mechanical things का जो हमें यूज करना पड़ता है actuators के अंदर. So these are the 5 types of actuators. First one is hydraulic based, second one is pneumatic based, third one is electrical based, fourth is thermal or magnetic based, and the last one is mechanical based. So we will see one by one in detail all of them. First, let's discuss about hydraulic based actuators. Okay. So what is hydraulic based actuators? In hydraulic based actuators, it uses cylinder or fluid motor. It uses cylinder or fluid motor that requires hydraulic power to convert that requires hydraulic power to convert into some mechanical operation. Okay, so generally it uses either cylinder or fluid motor. Fluid motor means motor consists of contained fluid, and it requires hydraulic power. This hydraulic power is converted this fluid motor fluid into mechanical operation. And mechanical motion could be mechanical operation means some kind of mechanical motion or some kind of mechanical things which happens as a output of actuators. So this mechanical motion can be either linear
can be either linear, rotatory means rotational motion, or oscillatory motion. Oscillatory motion means kind of pendulum. Oscillatory motion. So this is mechanical motion. But here one flaw is there. Hydraulic based actuators generally it is nearly impossible to compress any liquid. So we need to exert a large amount of force so that the hydraulic actuators will work. But due to this flaw, we generally not use so much hydraulic based actuators. So here it is impossible to compress liquid. To compress, we have to exert large amount of force. Large amount of force. That's why its usage is limited usage. मतलब हाइड्रोलिक बेस्ड एक्चुएटर एक ऐसा बेस्ड एक्चुएटर है जिसमें कि हमें फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी और उस फ्लूइड को हाइड्रोलिक पावर मतलब सम काइंड ऑफ टरबाइन और जो भी चीज का यूज करते हुए हम उस फ्लूइड को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। और वो मोशन कुछ भी हो सकता है, आइदर इन लीनियर मोशन और इन रोटेटरी मोशन और इन ऑसिलेटरी मोशन। बट फ्लूइड को कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ता है। अब ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसके अंदर। इस ड्रॉबैक के चलते इसका जो यूसेज है वो बहुत कम, इसीलिए हाइड्रोलिक बेस्ड एक्चुएटर्स जनरली ज्यादा यूज नहीं होते हैं। हाँ, यूज करते हैं, लेकिन दूसरे एक्चुएटर्स के कंपैरिजन में इस हाइड्रोलिक बेस्ड एक्चुएटर्स को हम बहुत कम यूज करते हैं। ओके, सो यू मस्ट नोट डाउन द पॉइंट्स। आफ्टर दैट वी विल सी द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर्स। Okay, let's see the second classification of actuators, which is pneumatic based actuators. So in pneumatic based actuators, it converts energy formed by vacuum or compressed air at high pressure into some mechanical motion. ओके, सो जो भी वैक्यूम या कंप्रेस्ड एयर होता है उस तरह के उसको हम हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैकेनिकल मोशन। एक्चुएटर्स में आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि ये हमेशा किसी इनपुट को मैकेनिकल मोशन में या फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिकल मोशन इज जनरल नथिंग बट अ काइंड ऑफ फिजिकल आउटपुट, एक फिजिकल आउटपुट में इसको कन्वर्ट कर रहा है। सो यहाँ पे भी कन्वर्शन ही हो रहा है, एक एनर्जी का एक इनपुट है, क्या इनपुट है, वैक्यूम और या कंप्रेस्ड एयर, उसको ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल मोशन। नेक्स्ट थिंग इज एग्जांपल्स आर न्यूमेटिक रैक
और पिनियन, ये दो एक्चुएटर्स होते हैं जनरली, के नाम ऐसे हैं कि न्यूमेटिक रैक और पिनियन। इनको हम यूज करते हैं valve controls of flow of pipes, valve controls of water. It is used for valve controls to in a flow of water in a flow of water, controls flow of water, valve controls flow of water in a pipe. ओके, सो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है न्यूमेटिक रैक और पिनियन। ये तो ऐसे एक्चुएटर्स हैं जिनका यूज हम क्या करते हैं, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे स्टार्ट और जो स्टॉप सिग्नल होता है उसकी जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट डज नॉट रिक्वायर स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल, it does not require start and stop signal. Okay, or it is generally used, it is generally used to convert pressure into force। ये प्रेशर को फोर्स में कन्वर्ट करता है, pressure into force। फोर्स इज सम काइंड ऑफ मैकेनिकल फिजिकल आउटपुट हो गया, प्रेशर इनपुट के तौर पे हमने ले लिया। तो प्रेशर को जनरली ये फोर्स को में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह के एक्चुएटर्स का यूज करते हैं। So it converts energy formed by vacuum or compressed air at high pressure into some mechanical motion. These mechanical motions can be either linear, rotatory or oscillatory motion. Examples are pneumatic rack or pinion. Pneumatic rack and pinion are used for valve controls of flow of water in a pipe. It does not require start and stop signals. It is generally used to convert pressure into force. So, pneumatic based actuators generally produce a large amount of force for a relatively small amount of pressure. So, small amount of pressure के लिए भी वो क्या करता है, एक large amount of force produce कर सकता है। अगर हम pressure कम भी दें तो भी वो हमें अच्छा खासा force जो है produce करके दिखा देगा। So, it is beneficial for ours कि हम न्यूमेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स का यूज करें। तो न्यूमेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स जो है काफी अच्छा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोलिक बेस्ड एक्चुएटर्स। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर्स व्हिच इज इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर्स। सो आवर थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर्स इज इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर्स। सो इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर्स generally powered by a motor kind of electrical motor that converts electrical energy into mechanical torque or motion. So don't confuse by this word torque. Torque means generally a rotational motion. अगर हमें रोटेशनल मोशन कराना है तो उसके लिए हमें एक ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि रोटेशनल मोशन पॉसिबल हो सके। उस फोर्स का नाम है टॉर्क। और लीनियर मोशन के लिए हमें सिंपल एक फोर्स लगाना पड़ता है। तो टॉर्क के अंदर हम दो फोर्स लगाते हैं जनरली, एक परपेंडिकुलर और एक
बेस में। तो इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फिजिकल आउटपुट में। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया फिजिकल आउटपुट में। फिजिकल आउटपुट आपका मैकेनिकल मोशन या टॉर्क हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ फिर से सोलेनॉइड वॉल्व का यूज कर सकते हैं। सोलेनॉइड वॉल्व में अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एज अ इनपुट दें, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल सप्लाई करें, तो ये सोलेनॉइड वॉल्व क्या करेगा, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करेगा पाइप के अंदर। तो सॉलिनॉइड वॉल्व, इसमें मैंने क्या किया, एज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई की, इसने कंट्रोल किया किसको, फ्लो ऑफ वाटर को, फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल किया, कंट्रोल्स फ्लो ऑफ वाटर, कंट्रोल फ्लो वाटर्स in our body. So this is the example of electrical based actuators. And the most important point is it is cleanest, cheapest and speedy actuators अवेलेबल। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर्स एक ऐसा एक्चुएटर्स होता है जो कि काफ़ी क्लीनेस्ट होता है, जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, चीपेस्ट होता है, सारे एक्चुएटर्स में से सबसे सस्ता होता है और स्पीडी होता है। काफ़ी जो है यहाँ पे काम जो है, वर्क जो है स्पीड में होता है। सो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और जनरली हम ज़्यादातर यूज जो है इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर्स का यूज करते हैं। So these are the points of electrical based actuators. First, it requires electrical energy and then it converts it into a mechanical motion or torque. Examples are solenoid valves, and it is cleanest, cheapest and speedy actuators available. So you note down the points. After that, we will see the next classification. Now let's see the next classification. Next classification is fourth type, which is thermal or magnetic based actuators. So in thermal or magnetic based actuators, this can be actuated. Actuated means कि आउटपुट जो फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो या तो थर्मल एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी, अगर इन दोनों में से कोई एक एनर्जी हम इसको देते हैं तो ही एक्चुएट कर पाएगा, वरना नहीं एक्चुएट कर पाएगा। तो दिस कैन बी एक्चुएटेड बाय अप्लाइंग थर्मल और मैग्नेटिक एनर्जी। ओके, सो अगर हमारे पास थर्मल एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी का सोर्स है तो हम उससे एक्चुएट कर सकते हैं, एक एक्चुएटर बना सकते हैं। बट they tend to be lightweight, compact, or sorry, they tend to be lightweight, compact or high power density. Okay, so this kind of actuators is generally lightweight because we are applying thermal or magnetic energy. So thermal और magnetic energy अप्लाई करते हैं, वो एनर्जी जो होती है जनरली ज़्यादा
हैवी नहीं होती है, इन द सेंस कि हम उसको एक्चुएटर्स में उतना फोर्सफुली नहीं लगाते हैं। तो इस बेस पे जो है ये एक्चुएटर्स जनरली लाइट वेट होते हैं, कॉम्पैक्टेड होते हैं और हाई पावर डेंसिटी के होते हैं। मतलब कि हम अगर कम एनर्जी भी लगाएं तो हमें जो जनरली पावर मिलेगा वो काफ़ी अच्छा जो है फिजिकल आउटपुट में पावर मिलेगा। So this is again a beneficial for us कि अगर हमें लाइट वेट एक्चुएटर्स चाहिए और हाई पावर डेंसिटी वाला एक्चुएटर्स चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थर्मल या फिर मैग्नेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स यूज कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए जनरली हमारे पास हम इसको बनाने के लिए शेप मेमोरी मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं। शेप मेमोरी मटेरियल का यूज नहीं कर सकते, शेप मेमोरी मटेरियल का यूज करते ही हैं इसको बनाने के लिए। शेप मेमोरी मटेरियल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में SMM भी बोला जाता है, SMM। शेप मेमोरी मटेरियल्स में जनरली हम यूज करते हैं शेप मेमोरी एलॉयज, शेप मेमोरी एलॉयज SMA, और मैग्नेटिक shape memory alloys, magnetic SMA. So these are the two things which are used to form thermal or magnetic based actuators. So फिर से मैं एक बार इसके बारे में ब्रीफ में बता देता हूँ थर्मल और मैग्नेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स क्या होते हैं। अगर आपको थर्मल और मैग्नेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको थर्मल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक्चुएटर सिर्फ थर्मल और मैग्नेटिक एनर्जी को ही रिस्पॉन्स करते हैं एज अ फिजिकल एज अ इनपुट के तौर पे, और उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरली आउटपुट मैकेनिकल टॉर्क या मोशन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दे टेंड टू बी लाइट वेट, ये लाइट वेट होता है, कॉम्पैक्ट होता है और इसकी जो पावर होती है वो काफी हाई होती है, हाई डेंसिटी की होती है। इसको बनाने के लिए हम शेप मेमोरी एलॉयज का यूज करते हैं या फिर मैग्नेटिक शेप मेमोरी एलॉयज। मैग्नेटिक शेप मेमोरी एलॉयज में हम जनरली मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। सो these are the points of thermal or magnetic based actuators. You note down the points. We will see the last classification of actuators. Now let's see the last classification of actuators. So last classification of actuators is mechanical based actuators. Mechanical based actuators. So here mechanical based actuators generally converts linear motion to rotatory motion or rotatory motion to oscillatory motion. Oscillatory motion to rotatory motion is some kind of converting one motion form to other motion form. Linear motion to rotatory motion to execute some event, to execute some movement. So in mechanical based actuators जहां पे कि आप फिजिकल इनपुट के तौर पे भी मैकेनिकल फॉर्म को दे रहे हो, मीन्स मोशन को दे रहे हो, और आउटपुट के तौर पे भी आप एक तरीके से मोशन ले रहे हो, तो ये क्या करता है एक मोशन को दूसरे मोशन में चेंज कर सकता है। वो लीनियर मोशन को रोटेटरी में कर सकता है, रोटेटरी को ऑसिलेटरी मोशन में कर सकता है, सम काइंड ऑफ चेंजिंग द मोशन। इट इन्वॉल्व्स गियर्स में यूज होता है, पुलिस जो पुल करने के लिए यूज करते हैं, चेन्स, शाफ्ट, etc. So many of the mechanical
devices like gears, pulleys, chain, shaft, etc. to derive some operation, to derive some work or to derive some mechanical motions. उसमें हम क्या करते हैं, इस मैकेनिकल बेस्ड एक्चुएटर्स का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रैक एंड पिनियन, दो एक्चुएटर्स होते हैं, रैक एंड पिनियन. इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्रैंक शाफ्ट के तौर पर. तो ये हमारा एक मैकेनिकल बेस्ड एक्चुएटर्स हो जाएगा. रैक एंड पिनियन मैंने आपको पहले बताया था, न्यूमेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स होते हैं जिसमें कि हमें प्रेशर, वैक्यूम या एयर प्रेशर की जरूरत होती है. सो इस दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज कन्वर्टेड टू क्रैंकशाफ्ट and it is generally called as mechanical based actuators. So mechanical based actuators में क्या होता है कि मोशन को हम एक मोशन को दूसरे मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. और मोशन आपको पता है कि लीनियरली हो सकते हैं, रोटेटरी हो सकते हैं, ऑसिलेटरी हो सकते हैं, साइक्लिक टाइप के मोशंस हो सकते हैं, अलग अलग काइंड्स के मोशन हो सकते हैं. तो जनरली हम मोशंस को इंटरचेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. तो ये एक्चुएटर्स जनरली के लिए यूज किया जाता है. और इसका यूज जनरली गियर्स, पुलीज, चेन्स वगैरह में हर जगह यूज करते हैं, शाफ्ट वगैरह में यूज किया जाता है ताकि ये इस तरह के आउटपुट को जनरली प्रोड्यूस कर सकें. एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आपको बताया रैक एंड पिनियन को हम क्रैंक शाफ्ट बना सकते हैं. ओके, सो ये हमारा लास्ट एक्चुएटर्स. तो एक्चुएटर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? पहले मैंने आपको एक्चुएटर्स के बारे में बताया कि एक्चुएटर्स होता क्या है. एक्चुएटर्स मैंने ये बताया था कि जो भी सिग्नल्स होती हैं वो सिग्नल्स आइदर इलेक्ट्रिकल फॉर्म हो सकती है, मैकेनिकल फॉर्म हो सकती है. उन सिग्नल्स को ये क्या करता है, फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है. जैसे कि स्विच क्या करती है, लाइट ऑन या ऑफ करती है. तो ये एक तरह का फिजिकल आउटपुट है. उसके बाद फिर मैंने आपको एक्चुएटर्स क्लासिफिकेशन बताया. सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा था हाइड्रोलिक बेस्ड एक्चुएटर्स. तो हाइड्रोलिक बेस्ड एक्चुएटर्स में क्या था कि हमें फ्लूइड का यूज करना था. फ्लूइड को हम कन्वर्ट करते हैं फिजिकल आउटपुट में, मतलब मोशंस में. उसी तरह से न्यूमेटिक बेस्ड है. न्यूमेटिक बेस्ड में हम वैक्यूम या फिर कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल मोशन या फिजिकल आउटपुट. मोशन जनरली मीन्स फिजिकल आउटपुट. थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन था इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर्स. इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर्स जो है उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है. उसको यूज करके हम उसे कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल मोशन, टॉर्क या फिर जो भी फिजिकल आउटपुट जिस तरह का हमें चाहिए उसको. फोर्थ वन इज थर्मल और मैग्नेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स, जहाँ पे हमें थर्मल और मैग्नेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको कन्वर्ट करने के लिए. थर्मल और मैग्नेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल मोशन, टॉर्क में, मतलब किसी फिजिकल आउटपुट. एंड द लास्ट वन इज मैकेनिकल बेस्ड एक्चुएटर्स, जहाँ पे एक मैकेनिकल मोशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे मोशन. सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ एक्चुएटर्स. थैंक यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस. So okay, today in this video lecture we are going to learn how to make this simple home automation project. For this home automation project we required some component. As you can see the components on the table. Let's begin with the introduction. So first we need a basic microcontroller. As you can see, you have already used in many videos and lectures, so you are already familiar with it. And the basic component, it's a tiny breadboard. I will use it to place the component and Bluetooth module as well on this board. Then I have this relay module. Basically it's a 4 relay module. You can see the relays 1 2 3 4, and here the pins are to connect the input to the relays. These are divided in the pair of 3 for each relay, the 1 2 3 for this relay,
4, 5, 6, and for this relay 2, and so on. So, and the next component, it is a Bluetooth module, that is a SC05 Bluetooth module. You can see there are 6 pin, and it has VCC pin, ground pin, transmitter pin, receiver pin, and also you have already used it, so you are familiar with it. And the next, I have this USB cable to connect this Arduino to your laptop, and we will need some jumper wires to make this connection out. Not this much, but we need some. And this LED bulb, this is basically a 9-watt bulb. It uses a very low power, and an extension board obviously to connect this LED to this socket, and a fan to finally show you how this fan and light will be working by connecting it to the Bluetooth module and interfacing it. We will be dealing and controlling it with our mobile handset. And also, let's begin with the connections. Let me make the connections, and first I will place this Bluetooth module on the breadboard, and now you can place it anywhere, so I'm just placing it here just to make easy connections. Let me do this. You have to press it, and for now, and now I'm going to connect these pins of this Bluetooth module to the Arduino. So first I need to connect it. You can as you know the pin configuration of this Bluetooth module. So first you need to identify the pins. So this is a VCC pin. Let me connect all 4 pins, and then after that I would be connecting each one by one. So let me do this. And this one is a ground. After that it is a transmitter pin, and this is a receiver pin. Now let's connect these pins to the Arduino. So let me do this. This is the VCC pin, which will go to the V-in pin of the Arduino, just like this. And this is the ground pin. This is a ground pin, and this need to be connected to the Arduino ground pin. After that, these transmitter and receiver pin, we would be connecting it after uploading our code. So just let it be like this. We would connect it later on in this video. And now let's make connection of this relay board to our Arduino. So just, you can see there are pins. There are 6 pins. You can see the ground one and the VCC, and these 4 for respective relays. So I'm here using the relay 1 and relay 4 to connect the LED bulb and fan. So just, you need to use the female jumper wire, that is female to male jumper wire, to connect this to the Arduino. So I have connected here the ground pin, and this is the VCC pin, and the input number 4, IN4 pin, and the last one, the IN1 pin. Make sure your connection should be right, otherwise it will not work. So this is the VCC pin. It needs to be connected to 5 volt of the Arduino pin, and the ground to the ground of the Arduino,
let me connect this. So this is a ground pin of the Arduino circuit, Arduino Uno board, sorry. Let me do this. And now this input pins needs some digital signal to turn on the respective relay. So first I am going to connect this IN1 input 1 pin to digital pin number 8 of the Arduino, and the other one, that is input 4 of this relay board, to the 9 pin, that is a digital pin of the Arduino. Now our connection and interfacing with the relay and Bluetooth module has completed. Let's connect these appliances to the relay circuit. Let me just do this to make connections easily. So first, this is a LED bulb, and you can see this is a wire. I have cut it. So you need to cut these wire. These wire need to be cut by a scissor. You can cut it by a scissor, but you need to cut the positive. When I say positive, means you need to cut this positive, the red wire, to make the connections. So make sure you are cutting the right wire to make the connection, otherwise it will not work. So I have already cut it, so, and hope you will cut it right. Now here also similarly I have also cut this part, this fan wire, and you need to do this thing with this fan also. So just let me connect this. So I am going to connect the LED bulb into the relay 1 and the fan to the relay 4. So you just need, this wire is going to be connected to the common and the open part of this relay. So this is the I and 1, means input 1. So just connect, let me connect this wires. So just, you need to be very careful while making the connections, and this is going to be an awesome project. So just I'm facing some issues, like it's not, sometimes it's not so easy to place these wires in minute holes, so you need to do it carefully. And this wire is connected, and let me connect the another one. Yeah, make sure it should not messed up. So need to correct it like this and connect it to the right port, otherwise this thing will not work and you will not get any kind of result. And this connection should be tight, otherwise, meanwhile, if this connection is loose, so it can create a short also. So you are going to use the AC main supply of your home, so you need to be very careful. And let me connect this fan wire to the input 4 or the relay module, on this relay module 4. So you just need to connect it. Let me do this. These connections, I'm repeating it again, these connections should be tight. That's why you will need a screwdriver to do this. And here it's the another one, and this is going to be connected. Now I have connected these two appliances to our relay module, and now we will upload code
to this Arduino by connecting with the USB cable to our Arduino laptop. So let me upload this code. So let's see the coding part. So as you can see, I have declared two variables, light and fan, and initialized them with value 8 and 9. Then inside the setup function, by using the serial begin function, I have set the baud rate to 9600. Then by using pin mode function, I have set the light and fan variable to output. By using pin mode function, I am telling the compiler that the pin number 8 and 9 on Arduino Uno board are set to output. Then by using digital write function, I set the light and fan variable to high, means they are set to off state. Then inside the loop function, I am checking for the connection of Bluetooth continuously by using serial available function, and if there is a connection, then I read the data using serial read function and store it in the variable data. Then I switch the data variable and check for A, B, C, D, the 4 cases. If the data received from the Bluetooth is small a, then I turn on the light. If it is small b, then I turn on the fan. If it is small c, then I turn off the light, and if it is small d, then I turn off the fan. And I do this in every 50 milliseconds. So that's it. So according to our program logic, we are first looking for the Bluetooth connection. If we get any Bluetooth connection, then we read the data using the serial read function. Then we evaluate the data and check for the conditions, that if it is A, then I turn on the light. If it is C, then I turn off the light. If it is small b, then I turn on the fan, and if it is small c, then I turn off the fan. That's it. Then save it, and you can compile it to your Arduino board first. Okay, there is an error here, sorry. Light. Okay, so I make it, and now I compile it again. So as you can see, it is successfully compiled. Now let me upload this code to the Arduino Uno board, and it has successfully uploaded. Okay, let's connect this Arduino to our laptop using this USB cable. So let me do this, and you'll see this power LED lights up when. So let me connect this. Yeah, you heard the sound of connecting. So I connected this USB, and now you have to connect this transmitter and receiver pin to the respective transmitter and receiver pin in opposite manner. Like the receiver pin will go to the transmitter of the Arduino, and you need to identify that. So first you need to identify this. So this is the transmitter pin, and it will go to the receiver pin, that is the pin number 0 of Arduino, and this is the transmitter pin that is connected to the receiver of this Bluetooth module. Now I'll show you to light up this bulb, how to light up this bulb and fan. So first you need an extension board here. To just make sure you need to be very careful, because we are using 220 volt AC voltage, that is of 50 Hz frequency, and the power is off for now. Let me connect this. So I just connected these to the extension socket, and now I am going to connect this Bluetooth module
to the Android phone, or I have that iPhone, so I'm going to connect it. Okay, sorry, I have this Android phone. So you can see here, when you scan, it will show you the SC05 module. I already paired it. You can see the SC05 in the pair device section, cause it is already paired. So you just need to click on this option, and now just turn the power on. Just turn the power on of this extension socket. So the power is on. Now I'll show you when I would be sending A. I just send A. You can see the LED bulb is on, and if I send the command as C, the character C, it will be off. And if I send B as an input, the fan will turn on. You can see nice here. Okay. And after that, if I send the D command, just send, you can see the fan is turned off. So let me do this again so that you can verify it. The A, I have sent it, LED is on. Now if I say send C, the LED is off. If I send B, the fan is on. And if I send D, the fan is turn off. So that's how this small home automation project works, and you can explore more by connecting these the many appliances in this relay module. So that was the very basic and simple project. And one more thing, you can also, if you don't want to connect this, okay. So now, as you seen that how this LED and fan work with the simple Bluetooth commands. So now let me show you the another way to connect this battery to power up this Arduino Uno board with this battery. Let me disconnect this USB. And now this is a 9-volt battery easily available in market. This is the plus terminal and another one is a minus terminal, and you can use this battery to power up your Arduino board. This is a simple connector. It's also available in the market at a very low cost. So just I'm going to show you how can you do this. So let me just place this thing. You need to connect in this manner. It's a simple, and this connector will go to the power barrel jack of this Arduino Uno board. This is a barrel jack, so you just need to connect it, and you can see the power LED lights up. And now I'll again show you how this home automation works. So let me do this. Just click on your phone SC05. I already paired it and showed you. So just again, if I say send a command A, okay, is there any kind of sorry, I haven't turned on this extension, so you just need to do this. Sorry, let me do this again. This was my mistake. And again, if I send command C, this will be off. And now from starting, I have sent the A
the LED bulb lights up. If I send B, the fan works nicely. And now you can turn turn off. If I send C, the LED will turn off. If I send D, the fan will be turned off. And let me show you again. The LED lights up, and command B to turn on your fan. If you don't want any kind of air in this winter, so you can just turn this off by sending the command B. The fan will be turned off. And now we want to save the power, so I am going to turn off this LED. Just you need to send C and this will turn off. This was the power of this automation project, and you can connect the multiple devices. You can explore more and more with these relay and Arduino and using this Bluetooth module. So thank you guys.